वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको बुलाने का मकसद ये था कि एक तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि मैंने पिछली 2-3 एपिसोड्स में रिमोट बेस वाली खासकर, बाइनेंस वाली खासकर, उसके ऊपर मैंने मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ बोली थी कि नाउ द टाइम इज सच कि आई एम genuinely very interested in Web 3.0, in the future of internet as it's evolving, and all of the interesting things that are about to come. So I wanted to have that understanding. More importantly, I will be going to Dubai soon, and वहाँ पर जाके मैंने conversations जो करनी हैं. Dubai is emerging as a center of sort of the future of internet, Web 3.0, Metaverse. There's a lot of phenomenal work happening there. और मैंने सोचा वहाँ जाके बेवकूफ़ों की तरह बात करने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा एक इंट्रो टू वेब 3.0 ले लूँ यहाँ पे विद एन एक्सपर्ट. आज हमारे साथ मौजूद है तलहा बिन अफजल, हु इज़ द CEO ऑफ Algoryte, विच इज़, अगर आप खुद ही बता दें कि व्हाट डज Algoryte डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ द शो. Thank you. Assalamu alaikum, Muzamil. Thank you for having me. Algoryte is a brainchild of two of us, me and my co-founder, and we wanted to have a Web3 services-based company in Pakistan, where we develop and we provide services or become technology partners for the Web3 startups across the world. और services में हम क्यों काम करना चाहते थे? Because I think एक लंबी debate है, लेकिन this is what we are defining it as. We partner with as many technology partnerships, develop their technology stack primarily on two technologies, which is Unity and Unreal, और उनके resources के ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे. So this is what it is. Interesting. मुझे थोड़ा सा बताएं before we sort of jump into this conversation, how did you evolve into this space? Because it's very new, it's very fresh. आजकल तो आप किसी को समझाने भी जाते हैं तो सर घूम जाता है, अपना भी घूम जाता है, दूसरे का भी घूम जाता है. एंड सो एंड इन लॉट ऑफ वेज लाइक यू गॉट इनटू द सर्विसेज साइड ऑफ थिंग्स, राइट? जो ओवरऑल वेब 3.0 के जो फ्लैशी एरियाज थे, NFTs एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड ऑल दोज थिंग्स, उनका एक बूम बस्ट साइकिल आया था जो कि ऑलरेडी हम उससे गुजर चुके हैं. जो मेरी टाइमलाइन, मुझे आपको पता है, आप उस बस्ट के बाद शुरू हुए हैं इफेक्टिवली, राइट? एंड सो there's not a lot of work here. अभी तो बहुत एक sort of novelty, tip of the iceberg वाला work हो रहा है. So this wasn't necessarily a short-term lucrative play. How did you evolve into it? If you could just share some background on your early life, education, and experiences. So I think early life, being a PAF brat, lived in a lot of places in Pakistan, studied at a lot of places, and वो एक आप over time different जगहों पे जाके आप different cultures से भी, पाकिस्तान में इतने सारे cultures हैं, उनसे मिलते हैं, and you learn a lot. And then there was this quick cultural shock for me back in 2009 when I moved to Italy with my family. So I lived there for 2 years and I did my international baccalaureate at a British international school. तो वो जो एक cultural exposure था with so many nationalities, that taught me a lot. Right. And coming from there, that huge perspective and change of perspective, and when I came back, there was another cultural shock. Right. That gave me a perspective ke how can I differentiate between Pakistan's culture, which is slightly regressive than progressive than the rest of the world, and मुझे actual सुनने में भी अक्सर यही आता था. And I came back and I started my university at Center for Advanced Studies in Engineering, और वो अपना CS का बैच पहला स्टार्ट कर रहे थे. राइट. अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पॉज करूँ आपको, पहले तो मुझे ये बताएं कि यू, माई अंडरस्टैंडिंग इज यू स्टडी फ्रॉम PF schools और, राइट? सो वहाँ से सडनली गोइंग टू इटली. इटली में कौन से शहर में थे? रोम में. राइट. वहाँ पर जाकर IB प्रोग्राम, एक तो प्रोग्रामिंग, डिड यू डू योर मैट्रिक हियर? I did my first year किया, और वहाँ पे जाके फिर मैंने दोबारा से IB किया, राइट? सो वो तो फॉर्मेटिंग ही डिफरेंट है भाई, करिकुलम की, स्टाइल ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह वगैरह. सो व्हाट वाज दैट लाइक? Very, I think it came as a shock. और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से, मैं बाकी चूँकि साइंसेस तो हम यहाँ पढ़ते रहते हैं, and when I chose 3 subjects as higher standards, जो कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री थे, and everybody used to be amazed कि यार wow,
hardcore science subjects, why are you doing this? And I knew that I had to do that क्योंकि वापस आके यूनिवर्सिटी का जब वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनता है ना तो वो उन 4-5 सब्जेक्ट्स पे बनता है. I had to do it. And then जो मैंने स्टैंडर्ड लेवल लिए थे वो इटालियन एब इनिशियो थे, इंग्लिश लिटरेचर था और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन था. I was excelling at the business administration somehow. I was very bad at Italian ab initio. Of course. And जो सबसे turning point था वो था English literature का. अच्छा. I was very bad at it at the beginning. Although कि हम यहाँ पे पाकिस्तानी स्कूल्स में अंग्रेज़ी पढ़ तो लेते हैं, क्लास में खड़े होकर रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन आपस में बोली नहीं जाती. सही. और तब तक वो दौर भी था कि हम लोग इंटरनेट पे भी अगर बात करते थे तो फेसबुक अभी करीब पाकिस्तान में आया था, ऑर्किड से हम निकले हुए थे, और MSNBC पे भी वही रोमन उर्दू में बात हुआ करती थी, और ऑर्किड पे भी. तो जब वो पहला साल गुजरा तो इट वाज अ नाइटमेयर फॉर मी. मैं चलो साइंसेस तो मैनेज कर लूँगा, सेम फार्मूला, सेम एवरीथिंग, बट द इंग्लिश लिटरेचर वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. एंड आई इवन स्पोक टू माय टीचर कि क्या मैं उसको उर्दू लिटरेचर कर लूँ. उन्होंने कहा कि यार आप कर लें, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, सो यू विल हैव टू स्टडी ऑन योर ओन एंड यू विल हैव टू डू प्रिपेयर योरसेल्फ एवरीथिंग ऑन योर ओन. आई स्पोक टू माय फादर एंड ही सेड कि लेट्स डू इट. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल गेट योर लेसर मार्क्स, बट लेट्स डू इट. एंड देन ओवर द पहला साल बड़ी मुश्किल से गुजरा. आई कुडंट डू दी सिमिलीज एंड द सिम्बलिज्म एंड द मेटाफोर्स एंड एवरीथिंग. वो पहली दफ़ा समझ रहे थे, देख रहे थे. एंड दैट ड्यूरिंग दैट समर आई स्टार्टेड वाचिंग लॉट्स ऑफ मूवीज विद द सबटाइटल्स. राइट. तो वो मेरी ग्रिप्स अंग्रेजी पे आ गई. एंड देन आई वेंट इनटू मॉडल यूनाइटेड नेशंस, गॉट अ चांस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. And then that sort of transformed me to understand it better, because I think वो सिर्फ language barrier था, understanding का barrier नहीं था. Do you think it's language barriers के अंदर confidence plays a very important role? I feel like a lot of times पाकिस्तान में, क्योंकि English is a global language. Yeah. हमारे यहाँ वो एक weird मेरी पॉडकास्ट से भी बहुत दफ़ा नीचे कमेंट सेक्शन में लोग आई कह रहे होते हैं, आप अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं, पाकिस्तानी सारे उर्दू बोलते हैं. इट्स वियर्ड बिकॉज पीपल वांट टू कनेक्ट टू द वर्ल्ड. वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स एंड वी टॉक अबाउट बीइंग ग्लोबल सिटीजन्स, बट वी डोंट वांट टू स्पीक द ग्लोबल लैंग्वेज, राइट? एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैसेज टू बिगिन टू अंडरस्टैंड. भाई मैं ये नहीं कह रहा उर्दू ना बोलें, मैं ये भी नहीं कह रहा कि उर्दू को इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन 2 लैंग्वेजेस तो ऑन एवरेज हर कोई बोल ही लेता है पूरी दुनिया में. और उन 2 लैंग्वेजेस में से इफ़ यू चूज़ इंग्लिश तो इट हेल्प्स यू इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज प्रोफेशनली. अब उसमें मैंने ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो इस वजह से नहीं सीख पाते क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उनका कोई दोस्त खीखी कर रहा होता है. कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का वो फुकदान होता है जिसकी वजह से वो होता है. In your case, when you were there and you would make like a mistake in English, Italy में in a third culture, how was that? Because Pakistan में I'm sure you've experienced that, right? कि किसी दोस्त को भी अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन आपने पुट्ठी इंग्लिश बोली तो उसने आगे मजाक उड़ाना शुरू कर दिया. Exactly. Did you find the same in Italy as well? Interestingly, European countries जितने भी ज़्यादा हैं अंग्रेजी इतनी ख़ास बोलते नहीं बोलते. हाँ. अब मेरे क्लास फेलोज़ कुछ इंग्लिश भी हैं, कुछ स्वीडिश हैं, कुछ पोलिश हैं, इटालियंस हैं थोड़े से, और डिफरेंट नेशनलिटीज़, इंडियंस भी हैं. एंड जितनी बुरी भी अंग्रेज़ी बोल लें, दे वुड से हाँ ठीक है, सही बोल रहा है, क्योंकि समझ आ रही है. और वो नोबडी वाज लाइक के व्हाई यू सेइंग उसके साथ पास्ट टेंस और ये ऐसे यूज़ होता है और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है. नोबडी केयर्स अबाउट दैट. सो एज अ यूरोपियन नेशन, or at least in a European country, they were not actually thinking कि English आना इतना important है. They would just take it as a language, whether you speak it right or not. Right. I think हमें भी शायद यही एक एंगल ये है कि ना हम उर्दू सही से सीख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी से बोल पाते हैं, although कि दोनों सिर्फ ज़ुबानें हैं. एक मीडियम है, कम्युनिकेशन मीडियम है, और कम्युनिकेशन का एक चैनल है. और हमारी अंग्रेज़ी से हमें आई थिंक दुनिया भर में बिजनेस बहुत अच्छा मिल जाता है. राइट. जब भी आप या एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में जब भी मैं बाहर गया हूँ या टर्की में गया हूँ, वो मुझसे पूछते हैं कि जी आप यूके से आए हुए हैं क्योंकि आप अंग्रेज़ी से ही बोल लेते हैं. तो उससे बेहतर ये है कि हम लोग जितने भी जगह पे जाते हैं तो हम
बेशक टूटी हुई भी अंग्रेजी बोलें, हम अच्छे से कम्युनिकेट कर कोहेरेंट बोल लें जो भी है। एग्जैक्टली, ऑल्दो कि अगर 5% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड स्पीक्स इंग्लिश, लेकिन वो 5% आपको एटलीस्ट डिफरेंट जगहों पे जाके एक अच्छा एक्सपोजर दे देती। उर्दू आना बहुत लाजमी है, मैं उसके भी बहुत हक में हूँ कि हमारे मज़ीद वो ड्रामे और वैसे आनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ी हमारी चूँकि अब एक प्रोफेशनल और एक ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है, तो बेशक आप टूटी फूटी भी बोल रहे हैं, बोल लें, सीख लें इतनी कि अगले को समझ आ जाए, एंड दैट्स इट। और ख़ासतौर पे जो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, मैं कहता हूँ दूसरे को इनकरेज कर लें अगर आपको बेहतर आती है, ताकि वो उसका सेल्फ एस्टीम वाला इशू ना हो। बाकी ठीक है, बाकी ठीक है, क्योंकि इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, दैट्स इट। 100%. Yes. Beyond education, how was Italy? Was that your first trip abroad, or had you traveled before as well? No, that was my first trip abroad, and ऑल्दो के इटालियन कल्चर कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अंग्रेज़ी नहीं आती, कहीं पे जाके आप बात नहीं कर सकते, तब हमारे पास फ़ोन भी वो नहीं था कि आप गूगल ट्रांसलेट करके घूमते रहें कि अच्छा ये और वो, और तो सीखने में थोड़ा टाइम लगा, और जब कुछ सीख ली तो वापस आने का वक्त आ गया। लेकिन इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग in terms of understanding the perspective from so many different nationalities। और हमारी lunch break में बहस बैठ के ये हो रही होती थी, there was a Jew guy who was from UK, and there was a guy, both from in fact from UK, और Palestinian Israeli conflict पे debate हो रही है, and none of them have been there, बट यहाँ पे बैठ के ये बात हो रही है, एंड और कोई किसी को मार नहीं रहा, मतलब एग्जैक्टली दे वर लाइक नहीं, देखो ऐसे नहीं होता, देखो वैसे नहीं होता, उस मीडिया ने ये कहा है, तुम उसकी भी बात सुनो, एंड देयर वाज सच अ हेल्दी डिस्कशन, एंड दैट लेड मी टू मॉडल यूनाइटेड नेशंस। सो आई वेंट टू मॉडल यूनाइटेड नेशंस का एक सबसे पहले मिलान में गया, फिर उसके बाद पेरिस में एक दफ़ा गया, इनफैक्ट 2 दफ़ा पेरिस में गया, एंड दैट वाज हैपनिंग एट द UN, आई थिंक इट वाज द UNDP और UNHRC बिल्डिंग इन द पेरिस। ऑल टुगेदर होल डिफरेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे एक्चुअल डिबेट्स होती हैं या UR में या सेशंस होते हैं। सो बीइंग देयर, आई थिंक ये इट्स अ अपॉर्चुनिटी, इट वाज अ प्रिविलेज बाय गॉड कि जाओ सीखो और वापस आओ और कुछ करो। देन केम बैक, स्टार्टेड डूइंग माई यूनिवर्सिटी। व्हाई डिड आई नॉट डू, इट्स बीन आस्क्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि जी वहीं क्यों नहीं पढ़ लिया या कहीं और क्यों नहीं चले गए सीखने के लिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि मैंने मैगिल के लिए अप्लाई किया, 3 दफ़ा अप्लाई किया वहीं से बैठ के, और मेरी जो वहाँ पे काउंसलर थी, टीचर थी, वो मेरी मैथ्स की भी टीचर थी, उन्होंने मेरे साथ बैठ के डॉक्यूमेंट्स ईमेल किए, हम लोगों ने 2 दफ़ा बाय पोस्ट भेजे, मैगिल ने 3 दफ़ा कहा कि जी हमें आपके कागजात मिल ही नहीं रहे। तो ये आसमानी ही था कुछ के। अच्छा, बट coming back to Pakistan, you know, going to CASE, you know, it's a new program. They've just started. You don't know how well it's going to be, and having the experience of, let's say, the Model United Nations, and a global experience, one would assume you'd probably opt for, let's say, IBA or LUMS, or at the very least sort of GIK, right? True. What was the thought process behind doing computer science, and also from a fairly new university? Actually, to be very honest, I did not dwell so much into choosing that university. By the time, because I got free from there, the admission dates had gone. Right. So जो भी बस मिल रहा था वो. Exactly. Also, I opted for the electrical engineering. Right. At the CASE University. But हुआ क्या, आप जाते हैं, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेते हैं, और मेरा एक्चुअली यही प्लान था कि या लम्स में जाना है या उसके बाद नश में जाना है, करनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। जब एक कैबिनेट सर्टिफिकेट बना और उन्होंने कहा कि आई डिड नॉट गेट द बेस्ट मार्क्स इन द IB, बट उन्होंने कहा जी आपके अराउंड 50% बन रहे हैं, तो आप ऐसा करें ना, देख लें कहाँ पे जाते हैं। केस में ऑल्दो कि मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो चुका था, एडमिशन हो चुका था, एंड इट वाज क्लियर, एंड व्हेन आई टुक इट टू देम एंड दे सेड कि आपकी इक्विवेलेंसी 50% 60% बिलो है, तो हम तो कर नहीं सकते। लाइक व्हाई नॉट चूज कंप्यूटर साइंस, इट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, एट लीस्ट एट दैट टाइम नोन, जो कि 2010 और जाके जी सबने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, ठीक है। ऑल्दो के फास्ट जो लोग ज़्यादातर फास्ट और कॉमसेट्स की तरफ देख रहे थे, दे वर फोकसिंग ऑन द कंप्यूटर साइंस मोस्टली। नहीं, इवन सच्ची बात है, मैं फास्ट कहूँ, मेरे साथ के बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो कि हमने इलेक्ट्रिकल में अप्लाई किया था, नहीं हुआ तो हम CS में आ गए। वो उस टाइम पे स्टिल ये वाला एलिमेंट अब तो बहुत पॉपुलराइज हो गया कि कंप्यूटर साइंस करना। एग्जैक्टली। तो
कंप्यूटर साइंस में वो जाके डीन से बात की, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा अच्छा यार ठीक है मैं तुम्हारी इक्विवेलेंस बनाता हूँ, इतने इतने परसेंट मार्क्स हैं, ठीक है आई लेट यू बी इन इवन दो यू आर लाइक फेयरली जस्ट बॉर्डर लाइन अबव 50%. बाद में जब इक्विवेलेंस बन के आई दैट वाज 68% एंड आई कुड गेट इनटू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. चलो अल्लाह से वही वाली बात है, किस्मत की बात है, बिकॉज इलेक्ट्रिकल वाले तो बेचारे बड़े रोए हैं उसके. एग्जैक्टली. तो मैं ये कह रहा हूँ कि कभी कभार ना दुआ करने अच्छी बात होती है, खुश होना चाहिए जब कोई चीज़ जिंदगी में ना मिले. इट्स एक्चुअली फॉर द बेटर. Sometimes God is protecting you from your own mistakes. Exactly. And we very careful what you wish for. Yeah, 100%. So got in there. It was the first program, and we got to know early on कि जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो कि बाहर से PhDs या मास्टर्स करके आ रहे हैं वो हमें मिल रहे हैं. Why? Because the new program and they were hand picking every टीचर जिसने कहीं लॉन से और कैलटेक से और यहाँ से PhDs और वो किए हुए, और उनको आप लेके आ रहे हैं. अब जॉर्जिया टेक से डॉक्टर शोएब भी पढ़े हुए थे, उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो वहाँ से देखें ना जितनी फैकल्टी आ सकती है. सो वी वर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द टीचर्स. फर्स्ट बैच था, एक्सपेरिमेंट था, सब अच्छा करना चाह रहे थे. हमें अच्छे टीचर्स मिले, काफ़ी कुछ सीखने को मिला. द फर्स्ट आपने ज़िंदगी में पहला कोई प्रोग्राम नहीं लिखा होता C++ में, हेलो वर्ल्ड में. इट ऑल्सो केम लाइक के यार अच्छा ठीक है ये भी होना होता है, ठीक है ये ऐसे हो जाता है. बट एक फेयरली एक आइडिया तो था कि ये प्रोग्रामिंग ऐसे होती है, बट यू हैवंट डन इट इन योर रेगुलरली. सो really good experience learning from there, but it was not, the case was not like a university, fancy university like others. Just आपको ComSet या NUS में मिलेगी, the whole environment and the campus and everything in the cafeteria. The case at that time was under the basement of the Sir Syed Memorial Museum. अच्छा. Yeah. ये जो अपना Serena F5 के पास है. Yeah. So it didn't look like a university. Yeah. It looked like a community college sort of thing जो कि पाकिस्तान में वर्जन. अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहां पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स. दे आर ऑफरिंग 2 वेरी कूल ट्रेनिंग्स. कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर एक कंपनी के अंदर क्या ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं जिनको आपने देखना होता है टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन. और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. चूँकि पढ़ाई अच्छी थी, लोग ठीक थे, और आपको वही एट पार वही एजुकेशन मिल रही है जो कि नश में शायद मिलती है, तो समझ में आ गया ठीक है, मतलब जो भी है. हाँ. कुर्सी भी शायद वही है, लेकिन हाँ AC अच्छा नहीं लगा हुआ, तो चलो खैर है. हाँ. तो गुड टीचर्स, रियली गुड लर्निंग, एंड देन फ्रॉम देयर एक्सपोजर, जहाँ चूँकि आपके अलमनाई भी नहीं है, यू आर द फर्स्ट वन एंड गोइंग इनटू द मार्केट एंड कनेक्टिंग विद द डिफरेंट. लेकिन आई थिंक जो डॉक्टर शोएब के कॉन्टैक्ट्स थे उसने हमें कहीं ना कहीं हेल्प किया, एटलीस्ट इन द इस्लामाबाद मार्केट. राइट. बिकॉज पीपल न्यू कि अच्छा केस जो है ना वो ब्रेन चाइल्ड है एंड डॉक्टर शोएब का है, एंड ही इज़ बीन रनिंग इट फ्रॉम 2006. तो इलेक्ट्रिकल वाले तो हमारे पास काफ़ी आ चुके हैं, वी नो दिस, इट्स गुड. सो हम लोग CS वालों को भी ट्राई कर लेते हैं. सो डिड माई इंटर्नशिप एट OVX टेक्नोलॉजीज. Did one in Karachi while my family had come back from Italy, and my father again got posted in Karachi. तो वहाँ पे मैंने Android पे थोड़ी सी internship की, and then I got to know कि okay, things are going fine. Right. At one point, one of the people once said there, वहाँ पे JavaScript हम लोगों ने सीखी और हम लोगों को इतनी utility समझ में नहीं आई. One fine day, just a senior developer, Android developer said कि यार जो future है ना वो JavaScript का है. And हम लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, यार JavaScript का कैसे फ्यूचर हो सकता है ना. And now we have this mean and MERN stacks and then everything revolving around JavaScript. Now we got to know कि अच्छा ठीक है, उनकी जो पेश गोई थी वो बिल्कुल ठीक थी. तो interesting experience. And then after that, after graduating, right the day it was our last day जो FIP का हमारा डिफेंस होता है, I had an interview at DPL, जो कि इस्लामाबाद में एक अच्छी जानी मानी सर्विसेज कंपनी है, and I got hired as a software engineer and started my journey from there. So software engineering मैंने कुछ 6 महीने जो
although I was not bad at programming, I graduated with a decent CGPA 3.42 something, जो कि सही था मेरे ख्याल से. लेकिन बैठ की प्रोग्रामिंग नहीं होती थी. आई वॉज मोर ऑफ अ पीपल्स पर्सन. आई वॉज मोर इन टू मैनेजमेंट एंड सैयद अहमद जो कि मेरे फॉर्मर बॉस और इस पॉडकास्ट पे सबसे पहले आ भी चुके हैं, ये कहता कि यार मैं पाशा का चेयरमैन बन रहा हूँ, विच इज़ पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन. व्हाई डोंट यू जॉइन मी हियर? डू यू वांट मी टू जॉइन हियर? इट्स मोर ऑफ अ मैनेजरियल सॉर्ट ऑफ वर्क. लाइक व्हाई नॉट? ज़्यादा एक्सपोजर होगा, सी लेवल लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लर्निंग होगी बहुत सारी. और ये वो I jumped into it and spent like 6 years at PASHA doing so many things. Membership से लेके smaller events से लेके बड़े PASHA ICD awards तक. Then पाकिस्तान की IT industry Asia Pacific level पे represent होती है, उसे एपिक्टा awards कहा जाता है. वहाँ से लेके इन सारी चीज़ों में I've been there, and also the regulatory or the policy level discussions. पाकिस्तान को ITA में क्यों साइन करना चाहिए, जो कि हम लोगों ने 15 साल पहले कर लिया हुआ है और अभी भी हम वही डिस्कशन में फंसे हैं. ITA क्या है? It's a treaty of sorts? A treaty of sorts where you get you don't have custom duties on the things to import, right, ताकि IT की एक्सेशन बेहतर हो सके मार्केट्स में. Right. और हमारा वो डॉलर वर्सेस इशू चलता ही रहता है इस वजह से. सो ऑल दोज पॉलिसी डिस्कशंस जहाँ पे FBR की समझ आना शुरू हुई कि टैक्सेस किस तरह से इम्पोज और किस तरह से मैनेज किए जा सकते हैं. 2016 में डिड अ ह्यूज कैंपेन विद सैयद अहमद एज द चेयरमैन कि हम लोगों को IT की एक्सपोर्ट्स के ऊपर 1% जो ज़ीरो रेटेड टैक्सेशन थी वो ख़त्म हो रही थी 2019 में. सो वी हैड टू प्रिपेयर. 2016 में इनफैक्ट ख़त्म हो रही थी. We did that huge campaign and got it extended till 2019, and then 2019 में फिर उसको 2025 तक लेके गए. वो सारी जो जर्नी थी कि कैंपेन कैसे की जाती है, लोगों को CEOs को इकट्ठा करना, ऑल्दो के हमारे IT के सारे CEOs they wanted to stay away कि गवर्नमेंट से पाला ना ही पड़े तो अच्छा है. But bringing in the community of all the C-level people, that was the really fundamental task at my end. And then उसके बाद डिफरेंट पॉलिसीज़ के बाद हम लोगों ने जब कम्युनिटी बिल्डिंग करने के लिए मज़ीद इवेंट्स, मज़ीद कन्वर्सेशंस अराउंड लेट्स से पाकिस्तान में पैसे आए कैसे जाते हैं, सेल्स कैसी करनी चाहिए, ट्रेनिंग जो कि अभी आई थिंक हमें बाद में इस पर भी बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो स्किल सेट है और जो यूनिवर्सिटीज़ की यील्ड है वो कोई इतनी ख़ास आ नहीं रही, तो उसको एक्सपोर्ट क्वालिटी कैसे बनाया जा सकता है. Right. So ये सारी चीज़ों में I was been there for 6 years, played a huge role I think, and at some point in 2020 when another former boss, which was also in the podcast earlier, he retired from the post of Secretary General, so I was the acting Secretary General for the almost 1.5 year. That was the peak COVID time. Right. और उस दौरान जब कोविड आ चुका और पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री somehow the other due to the good policies of the government at that time, we were flourishing and e-commerce हमारी बूम कर रही है, IT services और हम लोग IT enabled services को हम बूम पे जा रहे हैं. फिलीपींस में ऑफिसेस बंद हो रहे हैं तो they are looking for call centers in Pakistan because we were having a smart lockdown. और बाकी दुनिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं, हमारी कंपनीज कह रही हैं वी आर लुकिंग फॉर 400 पीपल टू हायर. ओके, तो रियली गुड टाइम्स, वेरी डिफरेंट टाइम्स, बट आई थिंक पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोविड का हुआ है इन टर्म्स ऑफ इट्स जंप इन डिजिटल स्पेस, आइदर विद द एडॉप्शन और विद व्हाटएवर वी आर क्रिएटिंग. Right. 6 years into PASHA and you had very clearly been in a sort of management एसोसिएशन इंडस्ट्री स्पेस, राइट? सो वहाँ पर आपने होलिस्टिकली इंडस्ट्री को भी समझ लिया, आपने ये भी देख लिया कि अच्छा जी टैलेंट का क्या इशू है, ऑल द नोड्स ऑफ द इंडस्ट्री. व्हाई डिड यू डिसाइड टू लीव एंड परस्यू, आई मीन अगर मैं करियर वाइज देखूँ, श्योर वहाँ पे तो ग्लास सीलिंग थी, मतलब आप एक एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल बन गए, उसके बाद आप क्या ही कर सकते हैं, बट you could have utilized that to let's say work in other industries. You know, आपकी पॉलिसी की बहुत सारी जॉब्स होती हैं मार्केट के अंदर. You did not decide to do that. You decided to open your own sort of software house, right, if you'd call it. Yeah. What was the thought process there, and particularly when you were
going about it, तो उसमें जब स्टार्ट में बंदा आता है तो 10 चीज़ें होती हैं ना, वेबसाइट बनाने से लेके ऐप बनाने से लेके यू नो आई कैन डू सो मच. हाउ डिड यू डिसाइड कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? सो फर्स्ट ऑफ मैंने एटलीस्ट ये तो सोचा हुआ था कि एट सम पॉइंट इन लाइफ आई हैव टू ओपन अप माई ओन बिजनेस. एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एक थी, लेकिन वो उसको मैंने कभी इतना एक्सरसाइज किया नहीं था. आई वांटेड टू डू इट. जब कुछ जॉब ऑफर्स थी और बहुत ज़्यादा जॉब ऑफर्स नहीं थी, आइदर विद अ लीडिंग कंपनी इन पाकिस्तान जो कि पहले शायद ऑयल एंड गैस में थे और उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे, और इट कुड बी अनदर कंपनी जो कि को वर्किंग स्पेसेस में काम करते हैं एवरीडे. LMKT और दूसरी कौन सी होगी? को वर्किंग स्पेसेस में दफ्तर खां भी था. तो वो सारे जॉब ऑप्शंस होने के बावजूद मैंने ये सोचा कि इफ़ आई नॉट स्टार्टेड राइट नाउ, ऑल्दो कि मुझे एक वो एक्सपोजर मिल चुका है और मैं सर्विसेज का काम आई थिंक फेयरली इतना जानता हूँ DPL में बैठ के कि मैं एक डिसेंट काम चला सकता हूँ. ऑल्दो कि सेल्स काम नहीं किया हुआ, सेल्स का एक्सपोजर शायद LMKR में मिल जाता जाके, लेकिन पीपल मैनेजमेंट and seeing the HR, how the HR is managed there and different companies, जब उनसे भी उनकी बातें सुना करते थे कि how the CEOs of different companies are managing it. Let's jump into that and let's learn, do the experiential learning while we do it. Why Web3? Web3 was when I started looking around and studying कि एक तो मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट था कि वी वांटेड टू डू समथिंग इन आई एम अ विजुअल पर्सन पर्सनली, सो मुझे वो ग्राफिकल विजुअल CGI इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती थी. एंड इफ़ यू आर इन दिस स्पेस, और जो कि Web3 ज़्यादा इमर्सिव और ज़्यादा इंटरेक्टिव स्पेस है, तो कैन वी डू समथिंग इन दिस एरिया? व्हाई नॉट फ्रॉम पाकिस्तान? मतलब पाकिस्तान में अभी तक वही क्यों गेम्स बन रही हैं जो कि सिर्फ प्ले स्टोर पे चलती हैं, और वो या यूजुअली किसी का रीस्किन क्लोन वर्जन होती हैं, और एंड नाउ वी आर सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग टू क्रिएटिंग सम न्यू थिंग्स जो कि अब अच्छा कंटेंट आने शुरू हो गया. ये मैं सिर्फ गेम्स की बात कर रहा हूँ, एनिमेशंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान में एनिमेशंस का काम बड़ा अच्छा से डिसेंट काफ़ी इदारे कर रहे हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं. सो व्हेन इट टू did a lot of R&D about this कि should I be on the Web3 side? Started from games, because games is like the starting point of games. Gamers are always the first adopters everywhere in the world, and then you can jump into a lot of other things जो कि Web3 में ज़्यादा interactive and immersive experiences दे सकते हैं. And that's when we decided we wanted to stick on this side, because it's fascinating, it's interesting, it's sort of drives us in a way that we can create lots of things in Pakistan, while doing that outsourcing जो कि बहुत सारे बड़े studios across the world करना चाहते हैं. Right, मैं conversation को थोड़ा सा switch करता हूँ, and I wanna have an understanding. अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकें कि Web 1, 2 and 3, like what's the difference? For a lot of people, they're very confused in terms of, जिसने आपने कहा ना, I mean, you're into the gaming space. You could have called yourself a gaming company, yeah, right? And some people say जी ये सारा जी buzzword ही है. अब वो आजकल जिस तरह ChatGPT आया है, तो एक अजीब अजाब मच गया है ट्विटर के ऊपर कि जी ChatGPT has killed this industry and now this has happened. Things don't happen that way. Exactly. They take time and इसकी evolution होती है. But yes, the core technology is interesting in terms of AI. Similarly, if you were to really give me the boring stuff, right? Ke beyond the world of NFTs and money doubling every month, what really is the underlying concept behind the evolution? जो Web 1.0 था वो क्या था? Web 2.0 जिसमें I am assuming आज हम exist कर रहे हैं, True. और Web 3.0 जिसमें हम जाएंगे, उसमें फ़र्क क्या है? So if you remember कि हमारे जो early 2000s थे, उसके अंदर वेबसाइट्स आती थी बहुत प्लेन बोरिंग, जिसके ऊपर किसी ने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके अंदर ग्राफिकल भी कम होता था और वीडियोस भी कम होते थे. That was Web 1.0. People could write something. It was actually written by very known either media houses or companies, bigger firms, or maybe financial institutions and everything, or the countries, because they had those
That was when Web 1.0, जिसमें आप actually खुद कुछ नहीं कर सकते थे as a user, you could just read. Right. That's 1.0. Right. So it's not two-way. It's one way. It's essentially one way. Yeah. One way. The Web 2.0 was where they could also do this and you could also do this. Right. The same way, the YouTube. अच्छा, वो अब कुछ इदारों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स बना दिए और सब वही इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब, Wikipedia, Google. Exactly. Right. Now you're also there's an option for user generated content, and that's Web 2.0. Right. But you either own some part of it or maybe none of it. जैसे अगर फेसबुक की कुछ गाइडलाइंस में चल के जो आपने कंटेंट पोस्ट कर दिया वो हमारा है किसी भी फॉर्म में. अब आपकी उसकी ओनरशिप ये है कि वो आपके अकाउंट से हुआ हुआ. अब आप डिलीट भी कर देंगे तो लेकिन डेटा में तो है. अब इसी तरह एवरीथिंग गोज ऑन द यूट्यूब और द स्पॉटिफाई बिकॉज अब आपकी उसकी ओनरशिप जो है वो कुछ लिमिटेड है. नाउ यू कुड रीड एंड राइट into the platform in terms of any graphical or written text, but now you still don't own it. Right. And now the Web3 is like read, write, and plus the ownership of it. Right. And now the ownership is like कि एक decentralized network है जो कि centralized, मतलब Facebook के servers नहीं है या Google या YouTube के servers नहीं है. Now it's a community backed peer-to-peer distributed system जो कि blockchain पे बना हुआ है. अब आपके पास इसकी ओनरशिप का कुछ मैक्सिमम परसेंटेज है. कहीं जगह पे आपको शायद रॉयल्टीज़ देनी पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन आपका मैक्सिमम जो है. अब इसीलिए जो नॉन फंजिबल टोकन्स या NFTs की जो एक बज़ आया था वो ये था कि आप डिजिटल एसेट्स पहले भी होते थे, ग्राफिकल इमेजेस, वीडियोस पहले भी होते थे, लेकिन आपकी उसकी ओनरशिप का इशू था. अब आपके पास उसकी ओनरशिप ज़्यादा है और अब अगर वो ट्रेडिंग भी हो रही है उसकी, तो you could possibly have the royalties over it. And that's why everybody was like, and when celebrities start throwing money at something and everybody, तो वो एक चीज़ हाइप बन जाती है उसकी और हर बंदा उसकी तरफ पैसे लगाना शुरू कर देता है. Right. तो Web3 में जब ये चीज़ें आई कि जी क्रिप्टो करेंसीज भी हैं, आपके NFTs भी हैं, and you can double the money, तो सबको शौक होता है कि जी पैसे डालें और कल अगले दिन मुझे डबल मिल जाए, why not? हाँ. तो वो पॉन्जी स्कीम्स की तरह वो चीज़ चलती ही रहती है. लेकिन अब चूंकि वो ज़रा सेटल हो रहा है, एक ग्लोबल लेवल पे आपकी क्रिप्टो करेंसीज लेवल डाउन होके अपनी एक्चुअल वैल्यू पे आके सेट होना शुरू हो रही है कि हम ये कम्युनिटी बैक्ड क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वैल्यू क्या देंगी इन दी एंड, या उन NFTs की वैल्यू क्या होगी एट द एंड. और अभी तक जो Web3 या मेटावर्स जिस पे हम बात अभी कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट ओनरशिप. राइट. या जो अगर हम बात करते हैं मेटावर्स पे तो हम आते हैं. आई थिंक मेटावर्स नाउ इज बिगिनिंग टू कम इनटू द मोर सॉर्ट ऑफ यूजर फेसिंग साइड ऑफ इट. बिफोर दैट हमने कहा कि Web 2.0 आया. आई वुड रिज्यूम Web 2.0 मे बी स्टार्टेड लेट 90s में. MySpace या इस तरह की एप्स जो हैं वो उसको ले आई, और फिर उसके बाद फिर really popularized over early 2000s when the sort of Orkuts and the Facebooks and the all of these came in. So in terms of Web 3.0 really, what's happening there? We haven't really heard of, मतलब मुझे novelty products का भी नहीं पता. जो पता लगा कि मुझे यूज केसेस का पता लग गया. राइट. सो NFT is a use case. True. Anyone going in and saying the monkey picture is what NFT is. No, the monkey picture is a symptom of it, but actually NFT is a use case and we don't know how it will pan out. इसकी एक evolution है, but yes, the utility is very clear कि when the world in its entirety would be locked out around NFTs, तो then एक आइटम अगर मैंने बनाया है और उसकी ओनरशिप इंटैक्ट है, तो इट विल बी फेयरली डिफिकल्ट टू जस्ट राइट क्लिक सेव एज एंड देन अपलोड इट अगेन. राइट. बिकॉज प्लेटफॉर्म्स विल बिगिन टू से कि लिसन, यू कैंट अपलोड एनीथिंग अनलेस देयर इज लाइक अ ट्रैकेबल ownership token attached to it. And if you are using someone else's, वो तो वो डायरेक्टली लिंक करके वो आपने पैसा कमाया, उसने सबसे रॉयल्टी उठाई और उसने उसको फेंक दी. सो बड़ी यूटिलिटी उसकी डायरेक्ट नज़र आती है. In terms of decentralized apps की अगर हम बात करें,
are there any use cases or are there any products that have begun to emerge जो कि इस सारे hypothesis की तरफ काम कर रहे हैं? And we're talking about the Web3 space, right? Web3 space. So again, इसकी मैं छोटी सी मिसाल इस तरह से दूंगा कि recently when Threads came in, so the founder, the head of Threads, he had put up a thread and he said कि जी हमने इसको अब ऐसा बनाया है कि आपका जो फॉलोअर वो है वो इफेक्टिवली आपकी मलकियत है, और अगर आप चाहेंगे, अभी हमने इसको स्ट्रक्चर देना है, बट इवेंचुअली आप अगर उठा के इसको मास्टरडॉन पे लेके जाना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट. एंड देन आई गूगल्ड मास्टरडॉन, आई फाउंड आउट कि दैट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क primarily running around the same premise. But उस तरह की examples, what are some of those? Right. So I think over time जब लोगों ने जो कि फर्स्ट एक्सपोजर और बज़वर्ड से उनका क्रिप्टो करेंसीज और NFT से हो गया, उनके बाद अभी इस तरह की कमोडिटी या एक्चुअल ओनरशिप वर्सेस वो डैप्स और डीफाइज क्रिएट होना शुरू हो रहे हैं. सो डिसेंट्रलाइज्ड एप्स में से एक एग्जांपल ये है जो आपके पास है, एंड ऑन द टॉप ऑफ माई हेड द एसेंस ऑफ दोज डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इज दैट कि if you are bringing something in terms of value or anything or viewership or ownership, so you're going to own it, and then that will be backed by your own, either your own token or the token that you are building it on. Could be Ethereum, could be something else. अब आपने एक क्रिप्टो करेंसी या एक ब्लॉकचेन के ऊपर एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बना ली है, लेट्स से न्यू यूट्यूब बना लिया. अब उसके ऊपर TBT पॉडकास्ट चलती है, राइट? सारे फॉलोअर्स यूट्यूब से उठ के वहाँ आ जाते हैं और वहीं पे देखते हैं. एंड नाउ लेट्स से यू आर चार्जिंग जस्ट one unit of TBT to view that. And that's how you're earning money to make it sustainable as well, which is, let's say, convertible into US dollars at certain convert. So that, for example, that TBT and decentralized app could have more value if more people are viewing it and they want to have ownership in it as well later on. And I'm just thinking out loud in a way that this is possible now. Right. And if I am doing this podcast, I can ask Muzamil, I want to have a certain fair share in this podcast value, jitne log dekhenge, and if you're charging 1 TBT, ताकि everybody is winning here. Right. Right? How does so ये तो मुझे समझ आ गई कि आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Obviously, let's talk about YouTube, right? So YouTube की money, एक होता है money in, money out, right? So the money in part is what generally everybody focuses on. कि यार, if I am sitting on YouTube and I am putting up my content there, पहला तो ये कि जो advertising revenue है वो 50% YouTube is going to take directly, and so they're the absolute winner there. दूसरा, YouTube, I'm at the whim of YouTube where they decide कि यार मुझे होम पेज पे ला के डालना है नहीं डालना, right. मेरे कंज्यूमर को मेरी नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी. मोर इम्पॉर्टेंटली जो आजकल बहुत ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया जिसमें पॉलिटिक्स जो आ गई है ना कि लेफ़्ट और राइट की पॉलिटिक्स, तो उस पर जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो बैन होना शुरू हो गए. एंड दैट्स वेयर पीपल वर लाइक ओके, सो अगेन आई एम नॉट अग्रीइंग और डिसएग्रीइंग विद वन, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि एट सम पॉइंट प्लेटफॉर्म्स came into controlling कि क्या सही है क्या गलत है. right. नेशन स्टेट्स को तो चलो आप फिर भी कह लेते हो कि यार ठीक है मैं उसको वो दे रहा हूँ, अपना वोट देता हूँ, मेरी स्टेट है. बट इसकी बहुत अच्छी मिसाल है ट्विटर की. रिसेंटली समवन वाज इन हुंजा एंड दे ट्राइड टू एक्सेस ट्विटर, एंड सो दे वेंट टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल, और उसके ऊपर लिखा हुआ आया कि जी government of India has banned this handle on Twitter, so आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते. चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी इंटरनेट के ऊपर वो ट्विटर इस्तेमाल करके ये कर रहे हैं, बट बिकॉज ट्विटर ने अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर वो वाला पूरा का पूरा कंटेंशियस पार्ट इंडिया के उसमें डाला हुआ है, तो वहाँ पे वो राइट. सो इट्स अ वेरी सिंपल वो कि when you, and I don't know what the politics behind that is, but that's messed up, right?
And so you realize that the only reason why this happened was because the Indian state could control a particular company and so on and so forth. और इंडियन स्टेट का बड़ा वो मशहूर भी आया कि जब ये जो एक्विजिशन है इलॉन मस्क की, उससे पहले ट्विटर के ऊपर बड़ा शोर उन्होंने थ्रेटन किया, ये किया वो किया, and they've been controlling the narrative over there as well. With decentralization, in a lot of ways, you can begin to really promote the fundamentals of freedom of speech and wo sara that we actually grew up dreaming, to be very honest. Yeah. That was the internet that we knew and imagined. And it is only recently that it's become this politically correct, weird space where पता नहीं क्या चलता है. वहाँ तक तो मैं समझ लेता हूँ. But उसके alternate के ऊपर, there is an incredibly huge cost associated with the processing that is required to run something like YouTube. Exactly. और ट्विटर, जो कि हमने रिसेंटली देखा कि जी इलॉन मस्क ने बंदे फायर किए तो ट्विटर के मसले आए. Right. So how does the technical part gets handled here in terms of who bears the cost? Where do these servers exist? Who bears the cost of processing? How do you engineer the product in itself? Is it more like a community driven updates to the sort of open platform, like let's say Wikipedia, or I can't think of examples, but I know for a fact there have been open source Web 2.0 products as well, where communities have come together and created. वो win आ रहा नहीं है, like GitHub exactly different projects आते हैं कि वो मिलते हैं और मिलके वो जो है ना उसको अपग्रेड कर लेते हैं, फिर सारी कम्युनिटी डिसाइड करती है, फिर उसको मजीद अपग्रेड डाल देती है. बट इट्स द कम्युनिटी, देयर इज नोबडी रियली, इट्स द मेजॉरिटी दैट इज डिसाइडिंग कि ये अब प्लेटफॉर्म किस तरफ जाए. Exactly. Right. So how does that work in these decentralized apps? So आई थिंक उसका पहले एक अंडरलाइंग फैक्टर ये है कि ये सारी ब्लॉकचेन बेस्ड हैं, और ब्लॉकचेन जो बनती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पे चलती है, और वो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क है इनफैक्ट. और वो नेटवर्क्स जो हैं, अब एनीबडी कैन डेडिकेट अ सर्वर फॉर दैट कम्युनिटी. इट कैन बी अ वर्चुअल और इट कैन बी एट योर ओन प्लेस. आपने 10, 20, 25 सर्वर्स लगा दिए हैं जो कि बहुत अच्छे हाईटेक हैं, और अब उसकी कॉस्ट आप बेयर भी कर रहे हैं, और उस कम्युनिटी में से आपको उसका शेयर भी मिल रहा है, बिकॉज यू आर गिविंग दैट वैल्यू टू द कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स ETH1 or Bitcoin 1 on a certain period, over the certain period of time. That's how you're earning that value from the community. So वो जो distributed system है, वो जो लोग उस कम्युनिटी का मेंबर बनते हैं उसके लिए दे प्रोवाइड दो सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ इट्स कंप्यूटिंग एंड एवरीथिंग. और इसके ऊपर यही एक्चुअली एक एंगल इतना ओवर टाइम रहा है कि वो जो जितनी भी कंप्यूटिंग कॉस्ट है और वो इलेक्ट्रिसिटी है और वो सब कुछ है, उसका क्लाइमेट पे क्या इफ़ेक्ट है, उसको मैनेज कैसे करेंगे. कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ गोइंग अप, हाउ यू कैन मैनेज दैट, जिसकी वजह से सोलर एनर्जी में या क्लीन एनर्जी वाले जो फैक्टर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुई कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें. सोलर एनर्जी की जो इन्वर्टर्स हैं और उनके जो पैनल्स हैं और उसके अंदर मटेरियल्स ऐसे यूज़ किए जाएं कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो. तो एक चीज़ ये उसको फ्यूल कर रही थी. अब वो जो सारी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जिसके ऊपर ब्लॉकचेन की हर वो ट्रांजैक्शन या वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर मज़ीद अब अनदर एप्लीकेशन लेयर बन रही है. दिस वाज द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी. अब उसके ऊपर एप्लीकेशन और बिजनेस लेयर्स बन रही हैं जो कि पिछले वेब 2 पे भी चल रही थी. अब उनको उसी की बेसिस पे उतनी, अब उसकी जो जितनी यूटिलिटी है, जितने यूजर्स होते जाएंगे, उसकी वैल्यू, उस कम्युनिटी की भी वैल्यू उतनी इंक्रीज होती जाएगी. It's exactly like how many countries are trading in dollars. That's why उसकी डॉलर की वैल्यू उतनी ज़्यादा है. अब जब चाइना ने डिसाइड करना है कि जी हमने युआन में करनी है, तो युआन में जब करेंगे तो उसकी वैल्यू फिर उस तरह से सेट होना शुरू हो जाएगी. Same goes for the Ethereum, same goes for the Bitcoin, Solana and so on and so forth. Right, but so I'm trying to understand again. YouTube की एक वीडियो है, TBT की एक वीडियो है, वो कहीं पे होस्ट हो रही है. Right. उसको 50,000 लोग देख रहे हैं, तो वो it has to have a cloud computing hardware setup. Exactly. Where it is and a processing setup to go with it, where it can quickly take up that video, parse it,
throw it to 50,000 different people simultaneously. वो load management कर सकती है, scale up, scale down at a given time, depending on requirement. And उसकी जो my understanding है, इसका जो blockchain element है, that is useful for the contracts, right? So the idea that this video was hosted here and is shown to this person actually belongs to this who used content from this or this, उस सारे को elegantly manage करने के लिए वो blockchain exist करती है, right? But जो actual Web 2.0 का आपने कहा जो layer है वो किधर host हुई भी है, वो right? समझ में आता है. और जो video है उसकी टेक्नोलॉजी जो है कि वो होस्ट किधर होगी, वो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मैंने एक पीसी लगा दिया, मैंने उसके ऊपर कहा कि जी मेरे पे आके होस्ट कर लें, तो मेरे जैसे 50 और होंगे ताकि एक रिडंडेंसी भी हो सिस्टम के अंदर. एक वक्त में जब उठ रही है तो वो कहीं क्या वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ऑफ दिस लेवल ऑप्टिमाइज्ड इनफ टू कम्पीट विद लेट्स से AWS के मैसिव सॉर्ट ऑफ डेटा फार्म्स जो कि क्रेजी बैंडविड्थ्स को यूज़ करते हैं, और वो दे आर यूजिंग द कटिंग एज टेक्नोलॉजी टू मेक श्योर कि जी द पिंग इज मिनिमम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So yes, that's going to be a competition, because जब तक जितने लोग एडवोकेट होंगे डिसेंट्रलाइज्ड और डेमोक्रेटाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स तो ऐसे ही काम करेंगे जो कि बैक्ड बाय कम्युनिटी हैं कि आपकी वीडियो एक्चुअली सिर्फ एक जगह पे होस्ट नहीं हो रही होगी, उसके चंक्स और वो जिस तरह से ब्लॉकचेन डिवाइड हुई हुई है वो हर जगह पे होस्ट हो रही होगी, राइट? लेकिन वो किस तरह अब उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कितना अच्छा ऑप्टिमाइज किया जाता है ओवर टाइम, और उसके अंदर कंप्रेशन रेट्स और वो सारी कंप्रेशन की टेक्नोलॉजीज कितनी अच्छी इस्तेमाल की जाती हैं, और उसको बाद में यूजर्स तक मिनिमम लेटेंसी के साथ कैसे पहुंचाया जा सकता है, ये अब उस कम्युनिटी का एक्चुअल रोल है, राइट? कि वो उसके ऊपर काम करेंगे और उसको बेहतर बनाएंगे ताकि उसकी जो यूटिलिटी ओवर टाइम है वो बेहतर की जा सके, सो दैट इफ आई एम प्लेइंग द सेम TBT वीडियो इन नाइजेरिया एंड आई एम प्लेइंग द सेम वीडियो इन द US, तो वो वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के नोड्स हैं वो मुझे वहाँ से वो वीडियो देखने को मिले, एंड देन इफ आई एम ओपनिंग दैट TBT डैप जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, वो मुझे वहाँ से एक्सेसिबल हो, ताकि जिस तरह के Web 2.0 में भी होता है, राइट? वो ऑफ कोर्स वो सारे जो सर्वर्स हैं वो गूगल के या यूट्यूब के अपने हैं या AWS के अपने हैं, यहाँ पे इस कम्युनिटी के हैं, राइट? नाउ अब वो एक और इसमें डिफरेंस यही है कि वो दैट इज नॉट ओन्ड बाय वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन AWS, नाउ दिस इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी, और जो कि खुद डिसाइड करती है कि हम लोगों ने किस तरह की टेक्नोलॉजी को मज़ीद इंट्रोड्यूस करना है अपनी ब्लॉकचेन के अंदर, ताकि हम बेहतर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और इसके ऊपर मज़ीद एप्लीकेशंस जो कि अब बन सकती हैं वो बने. Right. So my understanding is, and correct me if I'm wrong, my understanding is what's happening is a lot of times when we're looking at these decentralized apps, what we're thinking is that the consumer front of it is more democratized, right? So हम ये कहते हैं कि यार TBT को अपने डेटा पे ओनरशिप होगी, TBT के व्यूअर को अपने डेटा पे ओनरशिप होगी, वगैरह वगैरह वगैरह. What my understanding now is that it's not just that. In a lot of ways what we're doing is we're democratizing business as well. What do I mean by that? First of all, कि जो companies हैं, historically what we've seen is कि जी कोई एक बंदा है वो आके एक बहुत जीनियस है, उसने जाके एक बहुत जीनियस प्रोडक्ट बना दी और फिर वो स्केल करता है, फिर उसमें एक प्रॉपर मेथडोलॉजी है ऑफ हाउ वो एक इंडिविजुअल कितनी पावर रखता है, वीटो पावर है, बोर्ड जो है वो डिसाइड करता है. इन लॉट ऑफ वेज जब हम वाइडर कॉन्वर्सेशन में जाते हैं जो हमारी दुनिया में हो रही हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज, ऑफ इवन समथिंग एज बैड एज मनी लॉन्ड्रिंग, एंड बैंक्स ये करते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती है और वगैरह वगैरह वगैरह. सो यू आर इफेक्टिवली डेमोक्रेटाइजिंग दैट डिसीजन मेकिंग एज वेल. एग्जैक्टली. कि enough people as part of that community will decide the future of how this will go. अगर वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है और वो कम्युनिटी को लगता है कि ये बहुत डैमेजिंग होना शुरू हो गई है, तो कम्युनिटी उसको चेंज कर लेगी. ये एक इंसान के ऊपर नहीं है कि वो उसको किस तरीके से चला रहा है. दूसरा आई थिंक जो इसके अंदर एक मेजर एरिया मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि
पहले कंपनीज होती थी इंडिविजुअल, जिसको हम पाकिस्तान में आज तक सेठिया कंपनी कहते हैं. अमेरिका उसको एक स्टेप आगे लेकर गया और उसने कहा कि जी हम इसमें बाय-इन्स डालेंगे. स्टॉक मार्केट के थ्रू उन्होंने जाके करना शुरू कर दिया कि यू कैन ओन अ कंपनी एज वेल, यू कैन ओन अ कंपनी एज वेल. एंड ओनिंग अ कंपनी का कोर कॉन्सेप्ट ये था कि तुमने एक बहुत टाइनी परसेंटेज ऑफ अ कंपनी ले लिया, उसमें यू कैन आइदर बी प्रॉफिट और लॉस में आप पार्टनर बन गए, और उसमें अगेन डिसीजन मेकर्स बड़े थोड़े हैं. इफ़ यू आर एबल टू बाय इनफ ऑफ इट तो आप जाके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. एग्जैक्टली. एंड मेजॉरिटी ऑफ द माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स वुड नेवर बी एबल टू, क्योंकि कोई भी जाके उनकी एनुअल मीटिंग में फ्लाई करके अपना एक छोटा सा वोट ना देता, और हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल. What you're now doing is you're democratizing that aspect directly into the system where, let's say let's say D app YouTube है, ठीक है, और मैं सिर्फ उसमें TBT करना नहीं चाहता. TBT मैं होस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इसकी पावर पता है, इंपॉर्टेंस पता है, तो मैं 6 सर्वर्स लेके मैं कनेक्ट कर देता हूँ उसके साथ. Right? Now those servers will, every time there will be content being accessed and whatever, तो मुझे उसकी percentage मिल रही है. So effectively the AWS business is also democratizing in a way कि मैं I can get a chunk from that business as well. True. मैं छोटे लोग अपने छोटे businesses बना के उसके साथ plug in कर सकते हैं. Exactly. As long as it's a growing company. Does that make sense? Yes, and it actually you can do that now, and that's the beauty of it, right? Because if you are creating this content, you have more ways to earn from it, because you're putting in all the effort in doing. And then the community of TBT itself, they would have more say in the things. किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना, क्या बात होनी ज़रूरी है और क्या बात होनी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नहीं होनी चाहिए. एंड दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. और उसके ऊपर एक और चीज़ ये भी कि इवन दो यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑल दोज let's say resources from all these bigger companies to contribute to these decentralized systems. So what I'm trying to say here is कि आप 2 Azure के servers लें, 2 AWS के लें, कुछ Google के लें, और उसके ऊपर आप वही setup कर दें for the Ethereum probably. Right. And now you're contributing more to that decentralized system, and you have better stake in it, and you're being heard more, let's say. The same way you can get a chance to be part of a better member of any other community. Right. Because you have more resources allocated for it. Right. So this is what it is. And the people who are allocating those resources, they get paid as well, right? Yes. In terms of that, वही Bitcoin या Ethereum की, in terms of that, yes. वो मिल रही थी. Interesting. And obviously इसके सारे जो apps हैं उसके पीछे, every time we speak of apps, there is an element of finance, जो कि we know. I think apps के ऊपर इतना डिस्कशन नहीं हुआ जितना ज़्यादा DeFi is comparatively much more popular. Yes. Because of the cryptocurrencies. Because of the cryptocurrencies, and I think because of the changing world order as well, in a way where it's now that जो geopolitical discussion है उसमें जब लोग कह रहे हैं कि यार अच्छा डॉलर हेजेमनी एक एग्जिस्ट करती है और वी हैव टू गो अवे फ्रॉम इट, तो उसमें बिटकॉइन नाउ सडनली मेक्स अ लॉट मोर सेंस देन टू से कि अच्छा हम डॉलर हेजेमनी से हटके ना हम चाइनीज हेजेमनी बेच रहे हैं. इट्स लाइक द प्रेमिस के द अमेरिकन्स आर evil, so we need to go away from them and go to the Chinese. That doesn't make any sense, like you can't hop from one to another. The real progression will be when you say okay, let's not have one country decide a protocol that will obviously be driven by that country's agenda. Exactly. Right? So the distributed finance in a lot of ways, मुझे personally लग रहा है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा massively traction आएगी आने वाले वक्त के अंदर. And I think अभी जो हमें recent changes नज़र आ रही हैं उसमें मुझे ये भी समझ आ रही है कि now a lot of these people are beginning to understand कि किस तरह मामला जा रहा है, and so they're now buying whatever stake they can themselves. So मैं देख रहा था ब्लैकस्टोन है जो फाइनेंशियल कैपिटल वो है जिन्होंने रिसेंटली कहा है कि जी हम जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी के अंदर यूएस में आने के वो पहले बड़ा रेगुलेट कर रहे थे. तो now even countries are beginning to regulate it in such a way that they can get a piece of the pie, because eventually this will bypass them. Exactly. It will be bigger than that. अच्छा,
ये चले, ये तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं. लास्ट कपल ऑफ ईयर्स दिस न्यू थिंग हैज़ पॉप्ड अप, जिसको ऑब्वियसली फेसबुक हैज़ पॉपुलराइज्ड विद द वर्ड ऑफ मेटावर्स, एंड देन उन्होंने उसको अपने आप को मेटा बोल दिया, तो ऑटोमेटिकली इट्स नाउ एवरीवन understands कि एक चीज़ है मेटावर्स. Nobody truly understands it. Right. And I think जो really exciting moment for that was when sort of Vision Pro came out this year. Apple more often than not is always a little late to the market, but Apple tries to time itself कि वो critical mass से पहले पहुंचे. So काफ़ी दफ़ा एक product announce होती है, वो अभी early adopter पे होती है, वो हो रही होती है. And then when Apple comes in, so that's when it's now mass adoption की तरफ जाएगी चीज़, right? So for me, when I was looking at the Vision Pro demo, बड़े अरसे बाद iPhone moment नज़र आया मुझे. I think personally watch में वो नहीं था, personally AirPods and you know nice novelty and they definitely changed the game, but जो truly reimagining of a human experience, a large part of human experience was when Vision Pro came in and they announced that. And so उस वक्त मुझे ये बात समझ आना शुरू हो गई कि अच्छा जी अब 3 से 5 साल की गेम है और ये बहुत massively it will be everywhere. But still nobody truly understands is what is Metaverse. Is Metaverse just a VR AR sort of space where you know that's the future of how user experience will be on the internet, or is there a further depth to it, and how does the decentralized element come into play? Because ये discussion में बहुत ज़्यादा आता है कि अच्छा जी एक generic metaverse space होगी जिसमें लोग plug कर सकते हैं, so you can theoretically you go into the metaverse and then you decide that I want to go into the metaverse of Facebook here, and then let's say Epic के मैं metaverse में इस तरफ जाना चाहता हूँ. So how does that sort of a community driven the future of internet, like the way that I understand metaverse now is that is internet of the future, और उसके ऊपर क्या होता है that will be sort of either centralized or decentralized. बिल्कुल. सो मेटावर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो 1992 में एक अमेरिकन साईफाई ऑथर थे नील स्टीफनसन, उन्होंने एक टर्म कॉइन की कि एक जो ऑफ कोर्स नॉवल में कि जो दुनिया के अमीर लोग होंगे वो एक अल्टरनेट रियलिटी में जाके और 3D रियलिटी में दिल स्पेंड सम टाइम एंड डू थिंग्स, ठीक है, एंड दैट्स हाउ इट वाज कॉइंड. फिर उसके बाद 2003 में आपके पास कुछ गेम्स आना शुरू हुई. 2003 में देयर वाज अ गेम कॉल्ड सेकंड लाइफ. उन्होंने एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया कि आप देयर वाज अ यूज़र जनरेटेड कंटेंट जहाँ पे आप खुद जाते हैं और ख़ुद बना सकते हैं और ख़ुद कर सकते हैं, और वो फिर आगे जो फॉर्मेट है वो चला और काफ़ी सारी गेम्स में आया. तो अर्ली अडॉप्टर्स चूँकि गेम्स होते हैं तो वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, चीज़ें दिखा सकते हैं और लोग उसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं और उस तरह की चीज़ें आ गई. अब मेटावर्स एसेंशियली एक ऐसी चीज़ है जो कि एक अल्टरनेट रियलिटी है और द सेम और द रेप्लिका ऑफ द रियल वर्ल्ड है, which can be more immersive and interactive. इसको मैं यूजुअली ऐसे एग्जांपल देता हूँ क्योंकि लोगों को शायद किसी एक जगह पे जाने का या कहीं घूमने फिरने का ज़्यादा शौक होता है और पाकिस्तानीज़ पैलेस्टाइन नहीं जा सकते इतनी आसानी से. यू कैन नॉट गो टू अल-अक्सा मॉस्क. तो अगर मैं यहाँ पे बैठ के हैविंग सम सॉर्ट ऑफ गेयर, ऑफ कोर्स पहले तो वहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, अगर मैं VR का गेयर पहन के पैलेस्टाइन की गलियों में घूम सकता हूँ और मस्जिद अक्सा के अंदर जा सकता हूँ, तो दैट इज़ एन एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ. और इवन इफ़ आई एम टचिंग द वॉल्स, तो मुझे अभी तक तो वो टेक्नोलॉजी नहीं आई लेट्स से, लेकिन बाद में अगर वो टेक्नोलॉजी आ जाती है वेयर आई कैन एक्चुअली फील द वॉल्स एज वेल एंड आई कैन ऑल्सो लेट्स से प्रे इनसाइड द मॉस्क, दैट्स एन इंटरैक्टिव इमर्सिव मोर इमर्सिव रियल वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस जिस तरफ मेटावर्स बाद में जाएगी. It's I think limited by its hardware technology right now and software आ चुका है आपका और हम लोग वो चीज़ें कर सकते हैं. अच्छा, अब it's interesting though आपने वो बात बोली कि it's really a matter of haptic feedback, right? Exactly. You create suits. Exactly. This is a very interesting use case of praying in
in areas which would give you a lot of peace. Like I remember going to Medina and the prayer there was just incredible, right? Like Exactly. it just makes you feel different. And वहाँ की जब अजान ही होती है तो वही आपको differently feel करती है. And if you could just sort of feel the same way, the way that you would connect in your prayers would just be incredible. Exactly. And वही वाली बात है कि it's really about hardware where let's say you're wearing a suit with gloves and everything. Yes. और आप फर्श को टच करते हैं तो वो suddenly ठंडा करता है उसको और वो it's wow. Yeah. I never imagined that. Right. So it's all, of course, can be, and then it can be imagined and then can be made. Right. तो usually एक driven काफ़ी sci-fi movies होती हैं. Ready Player One एक movie थी where you can wear that suit, do all those quests and everything, earn things, and then when you do that challenge and आप वो 3 चीज़ें कर लेते हैं, you get the key, तो वो आपको एक award at the end मिल जाता है, या आप you get to achieve something in their real world जो कि actually real world में भी आपको मिल सकता है. So that's the let's say a sense of it जो कि हम लोग ultimately achieve करेंगे कि आपकी real world plus the virtual world will converge into a point where those two can be interchangeable. It's the same way as you do the e-commerce business and you sell something on Bonanza ने, सतरंगी ने, किसी ने भी XYZ brand ने एक XYZ brand ने कोई चीज़ बेची and now of course already चीज़ चल रही है कि try it on. अब आपका avatar exactly looking like yours, the same waist, same sort of neck size, same sort of hair, you can create that avatar and you try it on either by using those VR gear or without it. And you can see कि अच्छा मुझ पे ये जो नई शर्ट इसने लॉन्च की है ये कैसी लगेगी. And you can okay take a walk, maybe look in the mirror, sunlight में बाहर के लिए ठीक है या नहीं है, because people can be conscious like that about their clothes. The same way it goes for makeup. Same goes for other gadgets. कुछ लोगों को कुछ gadgets ऐसे पसंद होते हैं जो कि the wearables होते हैं, कुछ को ऐसी watch चाहिए. Should I spend money on it? Should I not? ये e-commerce की साइड हो गई. और ये फिजिकल है. So exactly. जब आप वर्चुअल में ऑलरेडी हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपैरल की अपनी एक इंडस्ट्री इज गोइंग टू देन पॉप अप, एंड दैट्स वेयर द NFTs really come in. Exactly. Right. फिर स्पोर्ट्स भी आ जाएंगी. फिर आपकी कारें, इफ़ यू वांट टू सिट इन अ टेस्ला, न्यूली लॉन्च टेस्ला, और उसका सराउंड साउंड कैसा, म्यूज़िक कैसा साउंड करेगा, और उसकी आप हाउ विल बी द फील ऑफ इट वाइल सिटिंग इनसाइड एंड ड्राइविंग somewhere on the roads of Manhattan probably. All that experience can be true through Metaverse. Right. Of course, वो gear के साथ और hardware and everything उसके साथ it will become possible. That's one thing. Right. Now, so far, चूँकि Metaverse अभी तक limited है games की तरफ, और सारी चीज़ें जो भी हैं उन्होंने अपना एक coin या टोकन जनरेट कर लिया हुआ है, उसके ऊपर वो टोकन से either you play and you earn and you own the assets, you own the avatars, you own other things, and that's how you own our decentralized apps का जो हम लोग बात कर रहे थे और democratization की बात कर रहे थे और जो user generated content की बात कर रहे थे. अब आप इसी तरह की metaverses में जाके as a game player you can create things, maybe own a piece of land and do things over there. And if people are, for example, create a game in a Roblox, and if people are playing those games, you're earning the money. It's a similar as well. It's a marketplace. It's other things as well. और उसकी जो conversion है वो एक token में हो रही है. But is the framework for Meta? So my question is Metaverse a framework driven by one company? Is it a framework that is decided by already a set of people? Like एक होता है ना जैसा Blu-ray is a framework or rather a standard जिसको कोई भी फैक्ट्री में प्रोड्यूस करके अपनी गेम में डाल के बेच सकता है. वो जो गेम डाल रहा है उसके वो पैसे कमा रहा है, बट वो एक everybody got together, let's say at GSMA कॉन्फ्रेंस जो है, दे सेट कि यार इस तरह से होना चाहिए, राइट? या USB-C है, या इवन इंटरनेट है बाय एंड लार्ज के. इंटरनेट की कुछ फंडामेंटल्स हैं. वंस you're in, nobody owns the internet effectively, right? When it comes to the metaverse, is it like कि फॉर एग्जाम्पल मैं विजन प्रो लगाता हूँ, विजन प्रो के ऊपर एक OS चल रहा है जो कि इस वक्त जो कि लेट्स से विजन OS है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग,
उस विजन ओएस में जो मुझे अभी तक नज़र आया उनकी डेमोज से, इट वाज लाइक उसका एक अपना एक यूज़र इंटरफेस है, एंड इट्स उन्होंने अपना वो वाला एलिमेंट रखा हुआ है कि यू गो इन, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट इंटुइटिवली हैपन एंड देन देयर आर सर्टेन एप्स. तो उन्होंने हमेशा अपने डेमोज में यही दिखाया कि यार आप डिफरेंट एप्स यूज़ कर रहे हो, आप डिफरेंट एप्स यूज़ कर रहे हो. लेट्स अज्यूम दैट यू ओपन द मेटावर्स ऐप. Right. Once you're into that metaverse app, is it Facebook's metaverse app? Is it happening individually driven by these corporations where you have to buy the real estate of Facebook's metaverse as well, and then now you have to buy the real estate of this one's metaverse as well? Right. Yeah, metaverse as a whole is coming together as a unified framework owned by none, and everyone can create their sort of shops. Do you get what I'm trying to say? Yeah. So I got your question, and actually these VR AR handsets are actually the means to enter those metaverses, which can be created by anyone. Okay. It can be me, it can be you, and we create a certain metaverse जिसके अंदर हम एक अभी तक गेम्स बेस्ड हैं, लेकिन हम उसको लेट्स से अगर हम लोग किसी और यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट यूटिलिटीज के कॉन्सेप्ट या कमोडिटीज के कॉन्सेप्ट पे ले जाते हैं. फॉर समथिंग एल्स, ठीक है. गेम्स को 2 मिनट साइड पे रखते हैं. दिमाग में आता है जनरली गेम्स आते हैं, गेम्स के सेकंड पे सोशल आता है. मेरे लिए सोशल इज नॉट दैट बिग ऑफ अ यूटिलिटी फॉर नाउ. इट्स डेफिनेटली देयर इन टर्म्स ऑफ द यूज केसेस. मेरे लिए जो बहुत बड़ी यूटिलिटी आती है पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर वो आती है वर्क, राइट. सो as we're going towards remote and as we're going more and more towards be wherever you are, digital nomad, freelancer, this or that, whatever. और इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन भी है मेरा, बल्कि मैं लिख लेता हूँ, मैं भूल ना जाऊँ. बट उसके लिए ना वो एक चीज़, जब कोविड आया था ना, तो कोविड में रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था. जब रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया तो जूम कॉल्स होना शुरू हो गई. जब जूम कॉल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई तो एक टर्म आई थी यूज़र फटीक, जूम फटीक की, राइट, जिसमें पीपल वर जस्ट लाइक यार हम थक गए हैं इन मीटिंग्स में, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स एग्जॉस्टिंग. इट्स वन थिंग टू बी सिटिंग विद समवन, आप बैठे होते हो, आप थोड़ा सा अंगड़ाई मुड़ाई ले लेते हो, आप 4 चुटखरे मार लेते हो. लेकिन इस केस में आपने मीटिंग ज्वाइन की है, अब आपने सीधा होकर बैठना है, आपका थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रहा होता है, तो वो plus things have become also very invasive, right, where now people are like कि जी हर 5 सेकंड बाद एक स्क्रीनशॉट ली जाएगी, आपके डेस्कटॉप की स्क्रीनशॉट ली जाएगी. पहले ट्रस्ट ज़्यादा होता था, तो आप करते क्या थे कि यू वुड the sacrifice was कि मैं ड्राइव करके ऑफिस चला जाऊँगा, right, but by and large you were left alone in the office, right, क्या आप अपने क्यूबिकल में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, आपके कोई सर पे नहीं खड़ा हुआ, right, बट आपको ये तो कंफर्ट मिल गई कि आप घर से कर रहे हो. बट अब उसमें उन्होंने 10,000 और चीज़ें डाल दी कि जी ये भी मैं टैप होगा, ये भी टैप होगा, ये भी टैप होगा, एंड दैट बिकेम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट वाज वेरी इन्वेसिव, बिकॉज दे वर लाइक कि यार मैं शायद 99 मिनट सब कुछ सही कर रहा हूँ, 1 मिनट जो मैं नहीं कर रहा और उससे मैं पहले रिलैक्स हो रहा था, अब मुझे उसकी भी टेंशन खानी पड़ रही है. एग्जैक्टली. सो मेरे लिए ना द लॉजिकल प्रोग्रेशन फॉर दिस अ वेरी यूजफुल, अगेन विच इज़ वाई आई डिडंट सी अ लॉट ऑफ गेमिंग यूज केसेस कमिंग आउट इन विजन प्रो. मेरे लिए मोस्ट ऑफ द यूज केसेस दैट दे ब्रॉट वर प्रोडक्टिविटी, अगर आपने नोटिस किया, राइट. सो दे वर कॉन्स्टेंटली शोइंग कि किस तरीके से आप लोगों से स्क्रीन टाइम के ऊपर वो बात कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, मोबिलिटी बरकरार रख के ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स किस तरह पूरी कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैं सुबह 9 बजे लेट से उठता हूँ, मैं कहीं पे काम करता हूँ, काम मेरा सर्विसेज है, रिमोट वर्क है तो सर्विसेज है, राइट. आई डोंट हैव टू लाइक सिट डाउन इन अ फैक्ट्री. सो सर्विसेज का काम है, दैट बेसिकली मीन्स कि मैंने कोई ना कोई किसी सॉफ्टवेयर पे करना है, कहीं ड्राइंग करनी है, कहीं ये वो जो भी मुझे करना है, ऑल ऑफ दैट कैन बी डन इन ए वर्चुअल ऑफिस, राइट, where I have a cubicle, I can sit in that cubicle and other people can exist as well in their own cubicle, and they can get up and they can look at me and they can just walk over and they can be like kya chal raha hai, right? So it brings us to the original intuitive sort of user experience जो office का होता था, right. let's assume कि वो एक experience है, ठीक है. मैं सुबह उठता हूँ और मैं ऑफिस जाता हूँ और मैं ये पहनता हूँ और मैं वो कर लेता हूँ. How do you see that happening? मेरे लिए तो एक imaginative सी चीज़ है कि दुनिया में sci-fi कि ये हो सकता है. Do you think कि ये how would that look like, for example, technically? So I think technically तो उसके लिए कोई issues हैं नहीं. We can create sort of that sort of experience, but it depends upon the organization whether they want to use it or not for their employees, right? You think this would be a metaverse? Let's assume an organization creates that. This would be a metaverse of that organization.
if they want, yes, if they create it, it will be, it's like proprietary, and the IP is of that organization, where they allow, or maybe they have their employees to work with them remotely. And for example, Nestle, जो कि दुनिया भर में काफ़ी जगहों पे है, and they want their senior managers to be part of the meeting rather than flying out to somewhere in the world, unless they really want to, because they should. तो अगर बहामास में जाके कॉन्फ्रेंस हो सकती है, why not? Right. But, and I think everybody would rather opt for the physical experience than the virtual experience. But if that's not possible, since with the COVID and everything, और अगर दोबारा से खुदा न खास्ता एक epidemic आ जाता है, now you can have all that experience. Of course, आपको वो हवा नहीं मिलेगी, वो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, but you can have that human experience sitting next to you. लेकिन आई थिंक इसमें यूज़ केस में ना एक थोड़ा सा फ्लॉ ये है कि हम लोगों ने जो समझना छोड़ दिया था कोविड में, वो ये था कि हाउ टू हैव दैट work-life balance and that privacy sort of borderline, कि जहाँ पे आपने invasion नहीं करनी and you don't own the lives of your employees and everything. वो एक इस वजह से ये use case में ना थोड़ी सी एक चीज़ ये angle आ जाती है कि अगर it will actually change the workplace environment, it will change the way people will work, how they'll be able to communicate better, they'll be able to see the expressions and everything better rather than just seeing the face as we are talking here. और अगर हमारे एक दोनों के holograms भी होते तो we could have been able to see कि हाँ ठीक है, मुज़म्मिल बैठे हुए बात ऐसे कर रहा है, expression ये हैं, so it's more like a human like physical sort of experience, और वो Zoom experience नहीं है. Right. और वही चीज़ें ultimately हम लोग कुछ गेयर से भी अचीव करेंगे, कुछ डिफरेंट गैजेट से भी अचीव करेंगे जो कि आपके hologram क्रिएट कर देंगे अल्टीमेटली, जो कि लेकिन एक यूज़र एक्सपीरियंस का एक एंगल है जो कि हम बार बार विजन प्रो की बात कर रहे हैं ना, मैं इसमें ये ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ कि विजन प्रो और एनी अदर VR AR हेडसेट इज़ नॉट एक्चुअली, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, कि मुझे नहीं वो पहनना सेट. यू गेटिंग व्हाट आई मीन? Why? Is it too bulky? It's just too clunky on my head, right? Right. I want to have that experience without wearing that gear. So in its eventuality, I mean, the way that, so, two things I find. Sorry, please continue. So uske andar, if I can have the same sort of experience because there's going to be a market, मैं इसको ऐसे ही बता देता हूँ, lots of people like to wear headphones, a lot of people like to wear earphones. And it's the same way because they don't want to have that clunky headset attached to their ears जहाँ पे वो थोड़ी देर बाद दुखना शुरू हो जाएगा, or maybe people who are really worried about their hairstyle जिस तरह मैं हूँ, और वो कहेंगे यार मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे तो मैंने पहनना नहीं है. सेम वे द मास्क पहनना एक मसला हो गया था, मतलब कितनी देर बंदा मास्क पहने, बिकॉज दैट्स नॉट वेरी ह्यूमन, राइट? अब चलो ईयरफोन्स हैं, इट्स जस्ट इन योर ईयर्स, दे आर नॉट डिस्टर्बिंग योर ईयर्स. आपने एक और गैजेट पहन लिया जिससे आपके सेंसर्स या होलोग्राफिक इमेजेस जो सामने आने हैं वो आपने गले में पहन लिया, इट्स वेरी लाइट, दैट्स ओके, इट्स एक्चुअली लाइक अ चेन और नेकलेस दैट यू कैन वेयर. फिर अब आपने ग्लव्स पहन लिए जो कि वेरी लाइट, और वो आप दे आर नॉट स्वेटिंग योर हैंड्स एंड एनीथिंग, वेरी लाइट. अब ये वो चीज़ें हैं जो कि लेट्स से आप डेली बेसिस पे पहन सकते हैं. यू कैन नॉट कीप वेयरिंग दैट हैंडसेट जिसकी अभी बैटरी लाइफ भी दो घंटे है, राइट? वो आपको पहन के 2 घंटे पहन के बात करना, नेक दर्द करना शुरू. एग्जैक्टली. मेरे लिए आई थिंक दैट वाज वर्जन 1, राइट? सो इट वाज लाइक आईफोन, क्लंकी, नो MMS, नो नथिंग. या देयर आर 2-3 एरियाज जहाँ पे मुझे जो इनोवेशन है वो बड़ी एक्साइट कर रही है. एक अगेन विद 5G एंड potentially 6G in its eventuality, just the pace of bandwidth की speeds is going to allow for very, very rapid transmission of data. With that, what could potentially happen is that अभी तक हमारा मसला ये होता है कि हमें processing के लिए ना we need to really put a lot of processing power within the device. Exactly. What I do envision in the future is that there will be a point where transmission and processing will be separated. Exactly. Right? So मैं फ़ोन अपना या processing device जो अपनी पॉकेट में रखता हूँ या बैक पॉकेट में रखता हूँ या कहीं पड़ा हुआ है, या इवन क्लाउड पे प्रोसेसिंग हो रही है, और एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक डिस्प्ले डिवाइस है और एक ट्रांसमिशन डिवाइस है. दूसरा न्यूरालिंक के ऊपर मैं बहुत सीरियसली उसको देख रहा हूँ, वेयर न्यूरालिंक potentially as it gets connected to your brain
I see that evolving a decade from now, where you don't need to wear the gloves, you don't need to, because it will build the sensation. Right. So it will really natively build that sensation in your brain, where जब पानी आया तो actually पानी नहीं आया, but वो पानी. So there is a very interesting series on Black Mirror की तो नहीं बात? नहीं. Black Mirror boring हो गया. उसका recent season I didn't like at all. There was a very interesting series on Apple TV. मैं लोगों को recommend करना चाहूँगा because I saw it and it's fascinating. Peripheral. Right. It's called the Peripheral. It's a very interesting concept. उसमें वो time का भी है, time travel का भी है और वो सारा कुछ है. But उसमें the core is basically this VR experience. और वो करता ये है कि वो ये कहता है कि जी वो आज का हमारा VR जो है ना वो हमें existing मतलब अभी भी ये मसला है ना कि ठीक है मैं कहता हूँ मैं अलेक्सा घूमने जा रहा हूँ, but it's really just buttons, right? Because when I'm wearing something, I can't start walking, I'll ram into a wall. Yes. But with Neuralink, एक time potentially आ सकता है जिसमें that brain will put you, that device will put you to sleep and embed an experience in you where you will very organically, realistically begin to experience that. Yes. And I think with the way that this is going, like मुझे ज़्यादा ये इस तरफ होता हुआ नज़र आता है maybe 40-50 years later, कि वो जो peripheral में भी ये concept है और भी उसमें वो आता है कि you zoom out from your main and then you say sort of wake up in plug into another reality, but that's another body altogether. So let's say my brother lives in Atlanta and he has a hardware body जिसके अंदर मैं प्लग इन. अब थियोरेटिकली हम ये कहते हैं कि कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र हो रही है, बट एक्चुअली कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र नहीं हो रही. एक्चुअली मेरी अगर मेरा ये मर जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता. एक्चुअली यही ब्रेन है. इस ब्रेन को उसका सारा डेटा फीड हो रहा है. यहाँ पे मैं सोया हुआ हूँ. इस ब्रेन को न्यूरालिंक जो है वो इफेक्टिवली उसका डेटा, उसकी लिसनिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, वो सारा तरह फीड करिए. आई वेक अप एंड आई रोम अराउंड दैट बॉडी. आई अटेंड माई नीस बर्थडे. मैं 4-5 घंटे लगाता हूँ, मैं वापस आता हूँ और मैं वापस आके प्लग आउट करता हूँ एंड आई वेक अप इन इस्लामाबाद, राइट? सो and now as I've started to understand that this is possible, like you can break it down as a problem solver, as a computer scientist, and you can see कि अच्छा with the AR experience and with Neuralink, which is bypassing, and I don't know if you guys have been studying the Neuralink research, it's just phenomenal what they're doing. Exactly. You can actually potentially imagine a future like that. Okay, that's way far off. Yes. But if you bring that back, maybe let's say a decade from now, maybe we can imagine smaller glasses. जो Google Glass नहीं आया था originally. Exactly, Google Glass भी एक option था. Glasses is still something which I feel like I can wear for longer. Yeah. So what do you think about that? So that's very interesting, in a way, because you can be somewhere where you can be, and of course वो आप consciousness नहीं transfer कर रहे, वो आप actually data transfer कर रहे हैं, and you are actually feeling it here. Yeah. और वो चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग वो होंगी 40-50 साल या मे बी उससे पहले ही हो जाएंगी, क्योंकि जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है हम लोग शायद 20-30 साल में वहीं पे पहुंच जाएं. राइट. अभी की जो गेयर है या अभी की जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ चीज़ें उससे पहले की अलाउ कर देती हैं. ऑफ कोर्स VR हैंडसेट बेहतर हो जाएंगे, डेटा ट्रांसमिशन बेहतर हो जाएगी, सॉफ्टवेयर ख़ास तौर पे जो मेटा का अपना है नॉट रियली गुड, बिकॉज दे हैव स्पेंट लाइक $100 billion ऑन देयर ओन मेटा एंड आई डोंट नो व्हाट दे हैव क्रिएटेड, सॉरी. सो and they're still bearing the losses. अपना वो नहीं मज़ेदार इतना मज़ेदार नहीं है. मतलब विजन ऑफ कोर्स जब भी एप्पल आता है तो वो सॉफ्टवेयर की सारी गेम ले आता है ना, और ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी और वो वर्टिकल इंटीग्रेशन लेकर आता है नेक्स्ट लेवल के. एग्जैक्टली. मतलब वो इवन दो कि 10 साल बाद आए, लेकिन जब वो चीज़ लेके आता है वो इतनी स्टेबल होती है, इतनी अच्छी, और यूज़र एक्सपीरियंस एक्चुअली वो फोकस कर रहे होते हैं तो वो इतनी अच्छी हो जाती है कि आप कहते हैं कि यार यही है जो है. वो VR हैंडसेट्स नहीं है. वो ऐसे ही है कि आपने ओप्पो का फ़ोन इस्तेमाल तो आप कर लेंगे, लेकिन वो आपको यूज़र एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा ना एक्चुअली. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज इट इंटरऑपरेबल. सो व्हाट आई मीन बाय दैट नॉट एट द मोमेंट. अच्छा, नॉट एट द मोमेंट. हाउएवर, क्योंकि कुछ वो ऐसे ही है कि आपने जो मेटा का मार्केट प्लेस है वो अभी मेटा पे रन करेगा, और वो आपने मेटा क्वेस्ट 2 पहन के या रिफ्ट पहन के आप ऑपरेट कर सकते हैं. इसी तरह जो और मार्केट प्लेसेस हैं वो जब वो इंटरचेंजेबल या मार्केट प्लेसेस और ओपन हो जाएंगी और
जो कि शायद ये भी होना चाहिए, जो कि हम नहीं एक्चुअली भी चाहते. जब डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क हो जिसके अंदर ये लोग प्लग इन करें rather than they design the एग्जैक्टली. तो मतलब वहां पे भी अगर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर की गेम चल रही है तो हम लोग यहाँ पे फिर डिसेंट्रलाइज और Web3 की बात क्यों कर रहे हैं. हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि वहां से उसको एक्सेसिबल होनी चाहिए. राइट. तो उसके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि जब ये कम्युनिटीज़ अपने आप को इतना वेल स्ट्रक्चर्ड और इतना वाइड स्प्रेड कर लें कि जो इनके ऊपर डैप्स और डीफाइज बनी हो उनकी यूटिलिटी ज़्यादा हो रादर देन दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो कि वो ऐप्स बनाएं, चाहे वो मेटा क्वेस्ट 2 के थ्रू. तो आप विजन प्रो लेके आप वो वाला सारा कंटेंट दे सकते हो जो कि सिर्फ एप्पल टीवी पे नहीं आ रहा. जो कि TBT ने अपनी ऐप पे बनाया है और वहाँ पे अब आप TBT का कॉइन यूज़ करते हुए आप वो यूज़ कर सकते हैं. और मे बी एनी कॉइन दैट आई हैव कैन बी एक्सचेंजेबल एंड आई कैन पे फॉर TBT टू वॉच इट. Right. And that's actually, it should be around, and rather than the other way around for the Web3 space. Right. In terms of VR though, what's the potential out there? नियर टर्म के अंदर कि आई मीन विजन प्रो आपने देखा, अभी उन्होंने लिटरली उन्होंने कुछ ज़्यादा देखा. उन्होंने ऑनेस्टली ना देयर वाज मोर ऑफ अ ब्रैग ऑफ द हार्डवेयर. द डेमो वाज जस्ट अ ब्रैग ऑफ व्हाट द हार्डवेयर कैन अचीव एंड इट्स जस्ट देयर आर सो मेनी सेंसर्स कि आपका दिमाग ही घूम जाता है कि यार मैं तो खेल के क्या क्या कुछ नहीं कर सकता. And I think that's one of the reasons why they said, I think the release is next year. Because early next year maybe. Early next year. What they've tried to do, I feel like, is that they've said, एक तो वन अप करना चाह रहे थे फेसबुक को, एंड दूसरा जो है दूसरा I think one of the things that they were trying to do was create a space that demo was not necessarily targeted towards the mass market. That was targeted towards the developer community, where they said, okay, listen, this is what's coming in and you need to hop on and start building because this is where it's at. And so obviously now I'd like to converge this conversation also to Algoryte. And in terms of what the sort of work that you guys are doing, have you done some research on, what is Vision Pro on a technical level? What are some of the use cases that will begin to pop up in the future? Are there, I'm sure अभी तो काम तो नहीं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ जो है ना जो इन हाउस टीम्स हैं वही पूरी दुनिया में कर रही होंगी. जब एक दफ़ा लॉन्च हो जाएगा तो थर्ड पार्टीज भी आएंगी, वो कहेंगे यार सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढो, उनसे हमें भी जनरली कॉपी करवाते हैं ना यार वो फ्रांस में वो हो रहा है तो हम टूनीसिया में ये करते हैं तो हमें कोई सर्विस प्रोवाइडर मिल जाए. बट have you guys dabbled into the framework and have they opened up the framework for developers? They haven't yet. Number one, because since we are a services and client-based company, we are doing the work in VR. जहाँ पे और अल्टीमेटली वी ऑल्सो इमेजिन कि VR से हम लोग क्या क्या चीज़ें अचीव कर सकते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल अ क्लाइंट for we are working is the automobile showroom and the automobile experience जो को VR में बनाना चाहते हैं. So a person sitting in New York can experience the drive of Audi on its roads while wearing that VR, and also can flip flop between the colors कि अच्छा नहीं मुझे काला नहीं तो मुझे पीला चाहिए और इस तरह से चाहिए और मैंने ये और फिर मैं सिलेक्शन करूँ और फिर अल्टीमेटली अभी VR में मज़ीद जो चीज़ें आनी हैं वो जो कि इन्होंने विजन प्रो में कर दिया, दैट्स द सराउंड साउंड, द बेटर साउंड वर्जन, राइट. तो VR से वो चीज़ नेक्स्ट आ जाएगी और फिर मेटा कुछ और निकालेगा और माइक्रोसॉफ्ट वाले कुछ और HTC वाले कुछ और अच्छी बेहतर टेक्नोलॉजी निकालेंगे और ओवर टाइम ये बेहतर होती जाएगी, राइट. लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों पे, अगर उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो वी आर प्राइमरीली वर्किंग ऑन द मेटावर्स फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स अक्रॉस US, Europe and some of the East Asian countries. Okay, explain it to me like this. Let's say a new client comes in, just like how one of your older clients. What do they ask you to do? So first thing is they have some idea which they want to work on, and they say either it can be a game primarily or it can be a metaverse in which they want to add different experiences, different games, different things at the moment. क्योंकि अभी तक जो बात metaverse पे है वो गेम्स पे ही फोकस्ड है ज़्यादा, और वही मैं कहना चाह रहा था कि हम लोग गेम से आगे भी जाएंगे और काफ़ी सारी चीज़ें और भी होंगी. ऑल्दो कि वो it's not called metaverse at the time जहाँ पे आप VR के ऊपर डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं and you are having the HR trainings of different organizations across the world. I feel like it will be called metaverse, right? I mean, yes. Metaverse is the framework. For me, it's the framework. Metaverse is just the term for the
for the experience, Yeah. which is more immersive than Web 2.0. That Right. is it. Right. क्योंकि अब जब भी हम लोग हमारे पास भी बहुत सारे लोग जब शुरू में NFT इट्स नॉन फंजिबल टोकन, लाइक अच्छा फिर बताएं वो नॉन फंजिबल क्या होता है, वो ज़रा समझा दें. नहीं, वो एक एसेट होता है और उस पर ये होता है. इट्स जस्ट अ डिजिटल एसेट, दैट्स इट. सिंपल टर्म. आप खान को यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़ो, आपका एक एग्जैक्टली. तो मेटावर्स भी एक इमर्सिव एक्सपीरियंस ज़्यादा बेहतर है, और वो जितना ज़्यादा इंटरैक्टिव और इमर्सिव होता जाएगा वो बेहतर होता जाएगा. दैट्स इट. अब उसके लिए गेयर्स चाहिए होंगे, कुछ और चीज़ें आएंगी. आपने जो क्लाइंट वाला सवाल किया, तो हम वो गेम्स पे आ रहे हैं ज़्यादातर. अभी तक ज़्यादा गेम्स पे फोकस्ड है. और वो so what are the sort, are they gaming companies or are they also third parties who are saying, hey, listen, we want to build or give me a profile of the sort of people who are now interested in this space. Are they proper companies or are they more like investors or startups, or what's happening there? So एक प्रोफाइल तो ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग वेब 2.0 गेम्स हैं वो वेब 3.0 पे कैसे जाएंगी. ओके, ठीक है. हम लोगों ने पिछली जितनी भी गेम्स हमारी पास थी, अब उसको वेब 3.0 में ले जाने का मकसद ये है कि एक तो अल्टीमेटली उसका एक्सपीरियंस बेहतर करना है और उसको इंटरैक्टिव बनाना है और उस गेयर को भी एट सम पॉइंट इंटरजेक्ट करना है. राइट. देन द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, जो कि पहले जैसे वैल्व ने काफ़ी सारी ऐसी गेम्स बनाई हैं जिसमें आपकी ओनरशिप आ जाती है आपके पास. अब उसी को आप अपना टोकन यूज़ करेंगे या किसी और का टोकन यूज़ करेंगे और उसको वैसे रन करेंगे. 10 सेंट की अब अगर 800 कंपनीज वो ओन करता है, एंड द टॉप ओनर्स ऑफ आई मीन द कंपनी विच ओन्स सो मेनी गेमिंग स्टूडियोज अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कैसे अपने सारे स्टूडियोज़ को पुश करेगा टू बी ऑन द वेब 3. अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि सेगा ने पहले दे वांटेड टू बी ऑन द वेब 3 साइड एंड नाउ दे हैव सॉर्ट ऑफ सेड कि नहीं, जो क्रिप्टो विंटर चल रहा है ना, we want to hold right now. Right. So वो अभी all across the world they are thinking they want to be in it, but they're deciding whether they want to jump in now or maybe later, and or maybe how they want to do it. That's one thing. That was one use case जिसमें existing companies they want from Web 2.0 to Web 3.0 journey करना चाहती हैं. So the other part is कि now since people are thinking of all the ideas they can imagine, and they essentially start from the games कि हम लोग इस तरह की गेम्स बनाएंगे और लोग उनको खेलेंगे और उसमें एसेट्स हम वो ओन करेंगे. इट्स अ प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट. तो अब काफ़ी सारे वेब 3 के स्टार्टअप्स जो पहले से भी चलती आ रही हैं वो मोस्टली गेम्स के अराउंड ही बनी हुई हैं और वो चाहते हैं कि हम उसको ज़्यादा बेहतर करते जाएं. माइनक्राफ्ट या रोब्लॉक्स की भी अगर एग्जांपल ले लें, you build something, you can create different sort of quests, missions and everything else, और वो ज़्यादातर गेमर्स से रिलेटेड है. अब although we at Algoryte we also want think at some point creating our own product जो कि सिर्फ गेम्स से रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए, because there are so many other people around the world जो पे, और of course हम आहिस्ता आहिस्ता सबको शायद टारगेट करेंगे. And that's why we were thinking at some point, why not create a space where there can be something for everyone and not just for the gamers. Of course you have a gaming arena और वहाँ पे चले जाएं और आपको सारी battle royale type सब कुछ मिलेगा, लेकिन how about if you want to go and do the shopping at the shopping mall and maybe go to the hospital and do जहाँ पे doctors की training होती है, it's a training institution, and then there's a corporate training institution, then all the possibilities जहाँ पे वहाँ पे trainers भी हैं और students भी हैं, दोनों का काम हो रहा है. Bigger corporations जहाँ पे factories और उनकी जो उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी प्रोडक्शन होती है और वो सारे प्रोसेसेस उनको एक्चुअल शो टाइम क्रिएट किए जाते हैं. एंड देन द टूरिज्म पार्ट, यू कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस. सो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोगों ने उनको डिफरेंट बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं. देयर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नेम्स, ओमनीवर्स, वेबवर्स, मल्टी मेटावर्स, which we also thought about to name it. But we eventually want to go there, but as a services, I think we at this point in Pakistan we are limited by the skill set. Right. तो हम लोग एज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को तो पूरा करने के लिए हम लोग
कुछ अनरियल इंजन और यूनिटी को यूज़ करते हुए हम कुछ आइदर फॉर मोबाइल, फॉर पीसी और फॉर प्ले, इवन फॉर कंसोल्स, प्ले स्टेशन या एक्सबॉक्स के लिए हम लोग वो गेम्स या मेटावर्स जो भी वो उसको कॉइन करना चाहते हैं वो हम उसको बना के तो दे सकते हैं. राइट. और वो चाहे लो पॉली है, हाई पॉली है, जितना हाई फिडिलिटी है, और आपको एटलीस्ट ये इंजन्स भी अब थोड़े से ज़रा सपोर्ट करते हैं कि वो हाई फिडिलिटी अगर हमने अनरियल इंजन की सपोर्ट के थ्रू जाना है तो हम बना सकते हैं. लेकिन द number of resources that we can hire is limited because the skill set is scarce. मुझे बताएं, यहाँ पर इफेक्टिवली दो किस्म के स्किल सेट्स यूज़ हो रहे हैं. एक आपका गेम डेवलपर, जो हिस्टोरिकली गेम डेवलपर एग्जिस्ट करता था, जो कि यूनिटी को यूज़ करना जानता है, जो कि उसके पीछे उसकी फ़लसफ़ा, एंड विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें आ जाती हैं. क्रिएटिव्स आ जाते हैं, स्टोरी बिल्डर्स आ जाते हैं, डिज़ाइनर्स आ जाते हैं, वगैरह वगैरह. बट एक वो वाला रिसोर्स है. और दूसरा ब्लॉकचेन का या सॉर्ट ऑफ वेब 3.0 का रिसोर्स. आर दीज द टू रिसोर्सेज, या इसमें और भी कोई एरियाज हैं जहाँ पर स्किल सेट? सो एसेंशियली पाकिस्तान आर्ट में तो इतना अच्छा नहीं है. ऑफ कोर्स जो क्रिएटिव सेंस है ना, वो यूजुअली अगर क्लाइंट लेके आता है, या काफ़ी सारी कंपनीज जो कि अब अच्छी स्टोरी बिल्डिंग और अच्छा आर्ट क्रिएट कर रही हैं, वो पाकिस्तान में कुछ हैं. टू नेम अ फ्यू, इन लाहौर देयर इज फ्रैग गेम्स, देयर इज नासन स्टूडियोज, एंड ऑल्सो द रिवॉल्विंग गेम्स जो कि पहले कैरामल टैक होती थी. राइट. दे आर US बेस्ड, हेडक्वार्टर्ड इन US, लेकिन सारा काम मोस्टली लाहौर में होता. अब आर्ट पे हमने थोड़ा सा बेहतर कर लिया काम, लेकिन जो इंजीनियरिंग पार्ट है, जो कि एक्चुअली बनाना है और उसको वो चलाना है, वो अभी तक एक चैलेंज है. आपके पास स्टोरी राइटर्स, जिस तरह अभी एक फ्रैग गेम्स एक गेम बना रहा है जो कि बहुत मज़े की गेम है. इट्स कॉल्ड दास्तान. इट्स ऑल सेंटर्ड ऑन दी सब कॉन्टिनेंट, और जहाँ पे जितनी डायनेस्टीज़ और जितने एराज गुजरे हैं, और उसको इकट्ठा एक टाइम पे जब वो थे तो उनको इकट्ठा कर दिया, जिसमें मराठास भी हैं और मुगल्स भी हैं और मंगोल्स भी हैं और अफ़गान भी हैं. रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन दैट. आई थिंक वो अपना, लेकिन जो उन्होंने स्टोरी राइटिंग उन्होंने कराई है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया से कुछ राइटर्स लिए और वहाँ से लिए और उनको वो क्रिएट किया. हम लोग शायद स्टोरी राइटर्स भी हमारे पास आ जाएंगे उसको मज़ीद क्रिएटिव करने के लिए. हमारे पास आर्ट अब बेहतर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग, आपके पास टूल्स ऐसे आ चुके हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन, और जनरेटिव AI से अब आप काफ़ी सारी, इफ़ यू थिंक you can at least create a template of it, right? And then you can then start tweaking it accordingly. Exactly. And then you can create those 3D models and then start bringing them into the games. And लेकिन जो engineering वाला perspective है ना, और engineering इसमें किस चीज़ की engineering? Unity की development है, या Unreal Engine की जो development है, वो एंगल अभी तक हमारा ना थोड़ा सा वीक है. Right. Why? For the longest period in Pakistan, जो गेम्स की कंपनीज थी वो काम करती थी कि वो, क्योंकि गूगल या प्ले स्टोर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो उनको अलाउ करते थे, दे यूज्ड टू डू द रीस्किनिंग एंड क्लोनिंग एंड देन क्रॉस मार्केटिंग एंड देन जनरेट मनी एंड दैट्स इट. 1 का 200, 100 का 200, 200 का 300, 400 वो हो जाता था आसानी से. फिर उन्होंने रेगुलेशंस चेंज करना शुरू की, कंटेंट, कॉपीराइट्स, ये वो. अब उनका काम ज़रा मुश्किल होता गया. ओवर टाइम दे did not focus on the quality, they focused on the quantity. अब सर्विसेज का मसला भी ये होता है, और सर्विसेज की अच्छी बात भी ये होती है कि वो एक चीज़ पे काम नहीं कर रहे होते, और जब क्लाइंट की डिमांड होती है कि हमें एक ये फ्यूचरिस्टिक फोटो रियलिस्टिक और बहुत ही अच्छी चीज़ चाहिए, हाई फिडिलिटी में चाहिए, या इवन दो कि लो पॉली चाहिए लेकिन इसके अंदर ये होनी चाहिए चीज़ें, सो आप अपना स्किल सेट वैसे यूज़ करते हैं. और आपके सर्विसेज कंपनी में to start with, you bring in the more generalist sort of people, and then you focus on कि अच्छा तुम अब सिर्फ टेक्निकल आर्टिस्ट हो और तुम अब सिर्फ ये वाले जो मैं प्रॉब्ली इसको सिंपली एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तानी रिसोर्स के अंदर ठहराव नहीं है. पाकिस्तानी रिसोर्स के अंदर बस ये होता है कि जल्दी जल्दी बस जंप इन करो और फेंक दो, बजाय इसके कि एक जो फिनिश आती है ना किसी भी चीज़ की, वो फिनिश हमेशा आपको मिसिंग लगती है. एंड दैट्स नॉट जस्ट इन गेम डेवलपमेंट, राइट? लाइक दैट्स एन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ आवर इंजीनियरिंग, जिसमें स्लॉपी मिस्टेक्स होती हैं. आपकी ऐप डेवलपमेंट में भी होती हैं, आपकी वो होती हैं कि इट्स नॉट वेरी क्लीन. That's probably because of the product owners, and that's not the engineering part. Because जब आप product owners या project managers अगर services में ले आए और उसको, they translate it in a way, they have to translate it in a way कि वो it becomes a really clean, good product.
Right. And we ourselves, because we could find that resource जो कि एक अच्छा उस चीज़ को ड्राइव कर सकता था, एंड ही कुड डिसइंटीग्रेट इट इन अ वे कि UI वाले और UX बंदे ने ये काम करना है और टेक्निकल आर्टिस्ट ने ये काम करना है और 3D मॉडलर और रिगिंग और एनिमेशन ऐसी होनी चाहिए, और अटेंशन टू दैट डिटेल कि अगर एक कैरेक्टर की मूवमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि नेचुरल लगे, और उसमें शायद 500 घंटे लगे हैं। एग्जैक्टली तो वो 500 घंटे लगाने के लिए मतलब क्लाइंट शायद या प्रोडक्ट ओनर रेडी नहीं है। Exactly. That attention to detail is probably the issue. It's Yeah. not that we can't do it. Right. And और of course वो एक different chapter खुल जाएगा प्रोफेशनल एथिक्स का यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ वापस इसी पे रहें और इसी पे फोकस रहें कि हम लोग वो स्किल सेट को आई थिंक हमें मैसेज पे क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर, और काफ़ी सारे हमारे लोग जो हैं अब उनको अवेयरनेस जो गेम्स की वजह से आई है वो PUBG खेलने की वजह से आई है, फोर्टनाइट खेलने की वजह से आई है। अब शायद लोग ये सोचना शुरू कर दें कि अगर मैं PUBG, और मज़े की बात यह और बहुत अच्छी बात यह भी है कि फीमेल्स they are playing PUBG and now and they can probably have more interest towards creating games and being chalo not engineering part, maybe the creative part of it, right. or maybe the UI UX or the storyboarding and the storytelling and the story writing part of it, or maybe the marketing part of it. Right. So maybe now this will create more awareness amongst the youth कि हम लोग ये भी एक करियर पाथ चूज़ कर सकते हैं। तो मेरा जो फॉर एग्जांपल हमारी जो टीम में एक सीनियर डेव आए, उन्होंने कहा यार अब मैं अपने माँ बाप को बता सकता हूँ कि जो मेरी सारी ज़िंदगी जो मैंने गेम्स खेली हैं उसका फ़ायदा ये हो रहा है। Now I can opt it as a profession because that's my passion. I like to play games and I like to make games with the same sort of experience जो कि मैं चाहता था कि मुझे भी मिले, या जिन गेम्स को मैं अब having that knowledge of 200 games probably that you have played over the years, now you can also tell, a person can tell यार उस गेम में UI UX बेहतर था, लेकिन उस गेम में ना ये वाली चीज़ अच्छी नहीं थी, इन्वेंट्री ऐसे होनी चाहिए, मार्केट प्लेस ऐसी दिखनी चाहिए, कैरेक्टर्स ऐसे दिखने चाहिए, and even if you want to create your own characters तो वो ऐसे होने चाहिए। मुझे एक बात बताएं कि इसमें जो आपकी इंजीनियरिंग लग रही है, एंड नॉट जस्ट कोर इंजीनियरिंग, इसमें तो ज़ाहिर है क्रिएटिव्स का बहुत सारा काम है, वो सारा कुछ है। डू यू नीड कंप्यूटर साइंटिस्ट्स फॉर ऑल ऑफ दिस वर्क? Not really. And follow up question to that, what's the maximum amount of time do you think it in terms of education, चाहे वो ट्रेनिंग से हो, चाहे वो कोर्सेज लेके हो, वगैरह वगैरह, what's the amount of time अगर कोई बंदा, let's say it's a perfect world environment, वो बंदा भी फुल जान मार के सीखना चाहता है और सिखाने वाला भी क्वालिटी का है और वो सिखा रहा है, कितना टाइम लगेगा उस रिसोर्स को एक क्वालिटी रिसोर्स में डेवलप होने में, इस पॉइंट पे कि अब वो क्वालिटी रिसोर्स कैन कम इन एंड लर्न द रेस्ट ऑन द जॉब? राइट। अच्छा, एक तो एंगल इसमें यह है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इवन दो गेम डेवलपमेंट में, और यूनिटी भी अगर आपने सीखनी है या अनरियल है, लेकिन वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, अ रियली गुड रिसोर्स, हैवंट डन गेम डेवलपमेंट एवर बिफोर, बट बहुत चीता अच्छा प्रोग्रामिंग का, राइट, and he can do really good programming. He has done on work on other technologies. Right. We got that resource, और वो चीता था चूँकि वो लॉजिकली और क्रिटिकल थिंकिंग में बहुत अच्छा चल सकता है, उसने वो काम करता। We did that experiment in like 5 to 6 months में he has become the resource that can generate really good value and create some good experiences. Right. तो 4 to 5 months, of course, But 4 to 5 वो है जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाला है, जिसको ऑलरेडी वो फंडामेंटल्स पता है। Yes. लेकिन अब अनरियल इंजन में फ़ायदा ये है कि उन्होंने अपने नो कोड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। राइट। वो ब्लूप्रिंट्स क्रिएट कर चुके हैं और ब्लूप्रिंट्स आप यूज़ करते हुए आप डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट गेम्स, और काफ़ी सारी ऐसी डिटेल्ड गेम्स भी हैं जो कि सिर्फ ब्लूप्रिंट्स पे बनी हुई हैं। राइट। सो देयर यू डोंट नीड दैट computer science experience. You can have any academic background, but if you can think critically and logically, क्योंकि मेरे दिमाग में ये आता है यार, जो वीडियो एडिटिंग में यही होता है, you have to think critically and logically. Exactly. Right? It's a tool you're using, and there's a kid coming to the office. He's 17 years old, and he's been editing on mobile. yes, इसको ना वो मेरी टीम में साहब हैं, ख़याम साजिद, बड़े जानते हैं सब लोग। yes, उन्होंने उनको एक टास्क दिया कि यार ये जो है वो आप एडिट निकालें,
ठीक है, मेरा ख्याल है फर्स्ट या सेकंड डे ऑफ यूजिंग प्रीमियर, 17-year-old kid, the edit that he brought out was just, it was mind numbing. मैं एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को बिठा दूँ ना, वो नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि उस बच्चे का दिमाग था. अब वो टूल, एक नया टूल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टूल, ही वॉज एबल टू डू दैट. फॉर मी, एज लॉन्ग अगर वो नो कोड पॉइंट पे जाता है तो इट्स नॉट गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम अब स्किल दिस 17-year-old टू ए के यार तू बैठ के यूनिटी के ऊपर पूरा वो एनवायरनमेंट बना और फिर उसके ऊपर कैरेक्टर्स बना और ये कर वो कर. सो दैट्स वेयर आई सी अ लॉट ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इसमें बहुत हमारा टैलेंट इस वक्त यूज़ हुआ है. जो कि AI इसमें से छान के बहुत थोड़ा टैलेंट ऊपर जाएगा, क्योंकि AI में अब थोड़ा सा, अब आपको अगर डिज़ाइन साइड पे जाना है तो आपको थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा चाहिए रादर देन जस्ट कॉपी पेस्टिंग एन आइडिया, राइट? जो बहुत क्रिटिकल थिंकिंग वाला है वो शायद इसमें ऊपर निकल जाए, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल नाउ हु विल रिक्वायर टू गो टू सम सॉर्ट ऑफ एन अदर टूल बेस्ड स्किल सेट. एग्जैक्टली. वहाँ पर डू यू थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन द नो कोड एरिया ऑफ स्मार्ट किड्स upskilling themselves and coming in? And if yes, how much time do you think that's going to take them to be able to really begin to be useful resources? So I think जो कि no code area है, that's going to take its own fair time if a person can only do the logical thinking and the critical thinking. And of course, if you know the end result, कि आपको एक्चुअली बनाना क्या है और किस तरह का एक्सपीरियंस आप जनरेट करना चाहते हैं, उसमें फिर VFX भी आ जाएंगे, SFX भी आ जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी. That person, if they spend like 6 months to 8 months religiously not learning, actually making, क्योंकि you can learn it, you can actually Google everything कि अच्छा मैंने अगर ये चीज़ करनी है तो ये कैसे हो जाएगी, कौन से ब्लूप्रिंट में क्या क्या इनपुट्स होंगे, क्या आउटपुट्स होंगे, बट आपको साथ साथ जो है ना वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है. दैट्स व्हेन यू स्टार्ट टू फेल एंड देन रियलाइज एग्जैक्टली. सो एक्चुअली अगर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपने अल्टीमेटली बनाना क्या है, तो आप वो बनाना, यू कैन टेक दैट पाथ. आपको एसेट्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपको कैरेक्टर्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, सारे एसेट्स. और देन देयर आर कंपनीज जो कि आप कस्टमाइज्ड कैरेक्टर्स और एसेट्स बना के दे रहे हैं. मतलब देयर कैन बी, एवरीथिंग कैन बी अवेलेबल, बट the integration and the making of it is the part where they need to focus on. And then when they can focus on it, मैंने ये 6 to 8 months मैंने ज़्यादा conservatively बोला है. Somebody can probably learn it into 2-3 months. We have a couple of interns who are working with us who have just joined. और पता नहीं कराची में कोई ख़ास ही आबो हवा है कि जब वहाँ से लोग आते हैं ना तो वो एक ख़ास किस्म की एनर्जी लेके आते हैं. तो वो आई थिंक वो जो धंधा मेंटालिटी है ना कि भाई काम करना है और बताओ, काम करना है, सीखने आए हैं हम, काम करना. एग्जैक्टली. तो वहाँ वो हमें एनर्जी फील होती है कि देयर लाइक यार आज ये करके उठेंगे और आज ये करना है और आज हमने वो करना है. सो रियली इंटरेस्टिंग यूज़ केसेस फ्रॉम अस कि हम लोग फिर हायर क्या कराची से करें सारे लोग आगे जाते हुए, और सारे रिमोट हैं. And somehow the professional ethics are much better. Achha. From here. People from here, from Islamabad, Pindi. Of course, हमारे पास जो seniors हैं वो यहीं इस्लामाबाद पिंडी के हैं, but और उनके professional ethics बहुत मज़ेदार हैं, अच्छे हैं, decent हैं, but somehow the younger resources और जो Gen Z वाला issue है, वो एक ज़्यादा एक Gen Z वाला इशू तो एक है. Don't even get me started there. Yes. तो ultimately I think we हम लोग एयर यूनिवर्सिटी गए. They have a dedicated program for game development. But what I think is they're touching like really surface level things कि अच्छा यार ये यूनिटी में ना ऐसे हो जाता है बस. Then there are institutions like Game Train जो कि basic level सिखा देते हैं and then you can turn on. अब जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाकिस्तान में क्विक्सिल को एपिक गेम्स ने एक्वायर कर लिया है और वो अब एपिक गेम्स पाकिस्तान है, और एपिक गेम्स पाकिस्तान फोकस कर रहा है कि हम लोग कम्युनिटी भी बिल्ड करें और हम लोग मज़ीद डेवलपर्स भी लाएं और उनको ट्रेन भी करेंगे. अब उनके जो अनरियल इंजन ऑथराइज इंस्ट्रक्टर्स होते हैं UAIs, दे कैन डू दैट बेसिक लेवल ट्रेनिंग. राइट. And then what we also drafted as a curriculum in-house कि हम लोगों को actually उन बच्चों को क्या सिखाना है, so that they can work on as a generalist, they can work on different projects.
हमें एक चैलेंज मैं आपको ये भी बता दूं, हमें ये भी आया कि हमने किसी एक अच्छी कंपनी जो कि अनरियल इंजन पे पहले काम कर रही थी, और हमने जब उस बच्चे को इंटरव्यू किया तो हमें समझ में आई कि वो सिर्फ बहुत ही एक फोकस्ड, एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ पे काम कर रहा है। रटा लगा के उसने काम तो रट लिया है, लेकिन अब वो उससे थोड़ा सा उसको लेफ्ट राइट किया जाएगा तो मसला हो यार जाएगा। ये कैसे। एग्जैक्टली। तो हमने इंटरव्यू में किया, या ये आपने काम किया हुआ नहीं किया हुआ, ये किया हुआ नहीं किया हुआ, ये किया हुआ नहीं किया हुआ। तो फिर हमें ख्याल आया कि अच्छा शायद चूँकि बड़ी कंपनी के पास वो रिसोर्सेज थे कि आप 10 बंदे ले आएँ एक काम के लिए, लेकिन हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम 10 बंदे लाएँ काम के लिए। हमने वो भी शायद 10 कामों के लिए एक बंदा चाहिए होगा। And I think future of work is also like that, right? You're working in a space, but you really have to navigate through. ये पुराना वक्त होता था कि आपने एक करियर बनाया, एक स्पेस में बनाया और 40 साल उसमें गुजार दिया। तो आपका things evolve so rapidly that you really have to be open to sort of इवॉल्व। जाहिर है कि ये नहीं कह रहे किसी को कि यार तुम एक दिन ऐप बना रहे हो, अगले दिन वेबसाइट बना रहे हो, अगले दिन गेम बना रहे हो, बट विद इन दैट स्पेस यू हैव टू सॉर्ट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। वी आर एट द 1 hour 50 minute mark again, one of the longest we've done recently. There's still a lot more जो हमने originally डिस्कस किया था. I really wanted to get into the talent part of things. There's a lot more there, and also game development के अंदर जो अब डेप्थ है वो हमने करनी थी. But it's interesting you've mentioned Epic Games Pakistan. We'll be having the founder of Quixel very, very soon. I've been chasing him for a couple of years, but he messaged me recently, said, there's some exciting news coming, and we'd love to come in now and share that news as well. So I'm excited for that conversation. Talha, this was super, super insightful. If someone wants to understand the sort of work that you guys do and, क्या आप कर रहे हैं, क्या services हैं, where can they go? They can come to us on our website. We of course sort of showcase what services we are giving, but the sort of work that we are doing, we haven't got the chance to go ask at a point from our clients कि अगर आप इसको showcase करना शुरू हैं because of NDAs. Right. Because they want to launch it at a certain date, and we have done so much of it, actually the whole of it. But you're bound by that, unfortunately. Yes, so as soon as they launch it, we'll start promoting it as our work. Of course, जब हम उन्होंने उनसे ये तो कहा है कि हमारे पास अगर कोई client आता है, हम लोग उनको ये showcase कर सकते हैं in the bits and pieces of it. So yes, we do that. But Zabardast. So if you can send your links, the relevant links, because I can definitely find them out. Yes. I want you to send the right ones to Varda, and we will have them integrated down in the comment section below. Not the comment section, description section, so that you guys can check them out. It's very interesting. It's very innovative. Again, this is the sort of company that you're hearing about now, and you're like, kya scene hai? But it's really going to be shining a decade from now. Because they're in a space that is just, अभी मैं net practice भी नहीं करूँगा, अभी मैं कह रहा हूँ nets बिछ रहे हैं to begin the net practice, and it's exciting, it's powerful, and we're at a time where really the last 10 years not a lot has changed. It's just the same adding on top of it, but this decade I genuinely feel like is going to really change the way that we live our जो हमारा लिविंग एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व करेगा, and there will be people who will be at the forefront of it, Talha being one of them. Sir, thank you so much for coming and sharing all that insight. Thank you very much for having me. And just was one last thing that I want to say. We are already trying to build that community called Algoverse. और यूजुअली हम उसको डिस्कॉर्ड पे कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग उसमें सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि things that we can do and how we can do it. Right. That's it. If someone of relevance wants to join, can they? Is it open? Yeah, it's all open. We have a link on the website as well. I'll share the link with you as well. Again, we'll put the link down below as well. And अब वो बहुत अगर spam बंदा आता है तो उसको साफ करना आपका काम है, but we'll put the link down. That's exciting. I would love to join as well if you could give me the opportunity. But thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you very much for having me. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आया अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं what do you think about the future of the internet, Web 3.0, cryptocurrency के बारे में कुछ ना बताएं. What do you think about decentralized apps, decentralized finance, and particularly what do you think about Metaverse and Vision Pro? How do you think that's going to change
the way that we're interacting on the digital space. I would love to hear your thoughts. But anyways, YouTube वाले like का बटन दबाएंगे, engagement बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों में कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स का नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जायज़ का सादा पे आ रहा होगा. If you'd like to support the channel, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ साथ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंटरनेशनल लिसनर्स एंड व्यूअर्स हमें सपोर्ट कर सकते हैं. We have a Stripe link, so you can use that as well. But anyways, this was Syed Muzamil Hasan Zedi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.